Madam, please. Welcome, sir. Madam, please welcome. Our Joint General Secretary, Amir Ahmed, sir. Now, I request to your honorable guest and Maheshwari sir and our office bearers, we will start our program with Deep Prajwalan, our Indian tradition. We will start with Deep Prajwalan. Sir, Subramanian sir, please. Renu. आर्यन कहाँ है भाई? आर्यन, ये दीप प्रज्वलन करना है. माचिस, माचिस. विजय जीवनी जी, विजय शर्मारे जी, प्लीज. वर्मा जी. बस ये हो जाता है. Mr. Aryan, please come here. Mr. Aryan, we are getting delayed for you.
अरे, क्या हो गया उसको? हेलो, कैसे जलाएगी? आइए ना आप। मोमबत्ती नहीं लाए हैं? राम साहब आइए। वो मेनू के पास मोमबत्ती लाइए। आप बैठिए, आप उसको बोल दीजिएगा, लाइए। ठीक हो गया। जी, ये है सत्य साई ऑडिटोरियम इंटरनेशनल सेंटर। ये रोजी रोड से ये विश्व कामा रोड है। हाँ, मंदिर के बिल्कुल साई मंदिर के, साई बाबा मंदिर के बिल्कुल अपोजिट है। हाँ, गेट नंबर 4 में पार्किंग है और गेट नंबर 3 से जैसे एंट्री है, पार्किंग में हमारा सिक्योरिटी गार्ड होगा, वो आपको गाइड कर देगा। आप ही का वेट हो रहा है, आप ही का वेट हो रहा है। धनेजा जी, शिव गोपाल जी आ रहे हैं, जरा उनको रिसीव कर दीजिए। Sorry, some delay is there. हम लोग अपना ये कार्यक्रम दीप प्रज्वलन से शुरू करेंगे। मैं हमारे सभी गेस्ट को निवेदन करूंगा कि प्लीज दीप प्रज्वलन के लिए आएं।
थैंक यू सर। फोटो सेशन के समय पे हमारे शिव गोपाल जी मिश्रा भी आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, रेल है हमारी, समय पे पहुंच गई सर। सर एकदम सही समय पे। थैंक यू सर। इसके बाद हम लोग हमारे भारतीय ट्रेडिशन के हिसाब से हमारा कार्यक्रम जो है दीप प्रज्वलन के बाद वंदे मातरम से करेंगे। मैं वंदे मातरम के लिए हमारे नागपुर से विशेष रूप से आए हुए हमारे साथी ओपी वर्मा, विजय जीवने जी और हमारे मुख्य जो गाने वाले विजय शैनमारे जी, इनसे निवेदन करूंगा कि वे वंदे मातरम गाएं। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की जय। धन्यवाद। आज के हमारे इस 68वें भारतीय पेंशनर समाज के अधिवेशन के लिए यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब से, महेश्वरी जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे अति विशिष्ट अतिथियों का पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करेंगे।
Madam Chauhan, madam. धन्यवाद सर. नहीं मिल गई. दीप चला दिए क्या? सब हो गया. कैंडल रखे ला दिए मैंने यहाँ से दुकान से खरीद के लाया. Now, I request to our Chairman Reception Committee, Shri Chauhan sir, please. Respected Dr. Gangadharan sir, Comrade Shiv Gopal Mishra ji, Comrade D. Bala Subramsi ji, Madam Saraswati Padmanabhan ji. On behalf of the All India Federation of Pensioner Association Chennai, we honor Bharat Pensioner Samaj by honoring the President, Mr. Chauhan ji. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I am grateful to Chennai branch. Thank you very much. The delegates from different organizations, associations, and brother members, I welcome and thank you all for gracing this occasion and encouraging this festival. Respected delegates on the dais is the thousands of registered NGOs and hundreds more are being registered every year. Many of them are getting handsome grants from Government of India. Several may be getting CSR and foreign funds. Office bearers of these NGOs, except very few, are drawing their remunerations also from their organizations. On the contrary, office bearers of Bharat Pension Samaj
and the affiliated pensioners organizations with who help hundreds of helpless pensioners, organizations, pensioners, family pensioners, and siblings of whose parents are no more, are rendering selfless, honorary service without getting a single paisa from any organization. Leave aside getting a paisa, they contribute from their own meager pension in pull out their organizations and BPS from financial crisis whenever occurs. Bharat Pension Samaj has been in the field of pensioners, family pensioners' welfare for the last 68 years. Today, it is entering its 69th year with more than 10 lakhs members on roll. So far, BPS has survived mainly from donations from the pensioner members and affiliates who too are now short of funds for themselves in the name of grant in aid. In the name of grant in aid, BPS gets only 75,000 a year with many riders on that. The meager pension of government retirees are presently under severe stress. Over the decades, Bharat Pension Samaj has been able to get numerous benefits for pensioners through advocacy and persuasion, a few of which are mentioned in the booklet which is with you. Madam and sirs, the audience in front of you today is in fact an ocean of knowledge and experience. They are the representatives of the people who gave their young years for the betterment of the country, and now in the evening of their lives, they and after them their spouses and siblings have to fend for themselves. It is not for that the government has not done anything. Many things have been done by the government, and which is streamlining the rules, improving the grievance redressal system mechanism, and submission of DLC every year. But as you know, the implementation of rules and availing benefits of government schemes is a Herculean task. In my language, badi kathin hai dagar pan ghat ki. BPS has pensioners, family pensioners, and siblings in overcoming these hurdles. Today, we are fortunate to have with us Dr. Gangadharan, former president of IFA and chairman Heritage Group, a stalwart who has been working for the senior citizens right from the age of 45 years, and is ardent supporter of Bharat Pension Samaj. Madam Saraswati Padmanabhan ji, lead person, Tata Trust Aging Initiative, Sri Comrade Shiv Gopal Mishra ji,
General Secretary, Staff Side, NCJCM, and our MCO partner, Comrade D. Bala Subramaniam, General Secretary, AIFPA, Chennai. With the assistance and blessings of these dignitaries, BPS in the coming years plans to work for strengthen healthcare facilities and pensioners, family pensioners, spreading digital literacy and awareness about government initiatives. I once again thank you all from the core of my heart for gracing this event. Jai Hind, Jai Bharat. Bharat Pension Samaj Amar Rahe. Thank you, चौहान सर. थैंक यू वेरी मच. मैं हमारे सेक्रेटरी जनरल माहेश्वरी जी को निवेदन करूंगा कि वो सेक्रेटरी रिपोर्ट रखेंगे. Distinguished guests on the dais, respected BPS Managing Committee members, delegates from the affiliated associations, members, brothers and sisters. I am pleased to welcome you all to this 68th AGM of Bharat Pensioner Samaj Federation here in New Delhi, the capital city of Bharat, which is glowing with the grace of Bharat Mandapam. Just Comrade Maheshwari ji, our friend, philosopher and guide, on behalf of the All India Federation of Pensioner Association, we consider it a great honor to honor him at this event. Thank you. thank you. Thank you. Thank you. I am pleased to welcome all to this 68th AGM of Bharat Pensioner Samaj Federation here in New Delhi, the capital city of Bharat, which is glowing with the grace of Bharat Mandapam, the new parliament building, and the beautiful Kartavya path. Like Bharat, which has emerged as a world leader, Bharat Pensioner Samaj also has come out as a pioneer among pensioners organizations with complete digitalization. Last year, we were in severe financial crisis. However, our affiliated associations and the respected members responded to our calls so well that we could come out of the crisis gracefully. Thank you, all of you, for that. I especially thank our affiliates from Mizoram and Manipur who have come in spite of all the problems in the Manipur and that Mizoram section, and still they have made it to this AGM. I welcome them specially and thanks them all. We had a very successful 67th AGM at Nagpur, and today you are all here to make 68th AGM a graceful event. The period between 67th AGM and the 68th AGM has been quite eventful. On 7th of July 2023, we had an unusual visitor to our office, the Secretary Government of India, Ministry of Personal, PG and Pension, along with Additional Secretary, DOP PW, Director PW DOP, and the Senior Consultant,
came down to the BPS office, reviewed our complete work, had a very useful and interesting interaction with us, and wonderfully, they hosted a sumptuous lunch for all those who were present in the office that day. To memorize the event, the Secretary Government of India planted a mango tree in the park in front of BPS office. His posts on PIB, Twitter and Facebook describing his visit to the BPS office gave a great boost and inspiration to the organization. Another surprise came on 30th of September 2003 when a team of Critic Communication Private Limited with video cameras came down to BPS office with instructions from DOP and PW to videograph BPS working. The team stayed for over an hour videographing different operations of BPS working. Yet another surprise came in the form of an invitation to attend UNFPA event launching of India Aging Report 2023 on 27/9/2003, in Chapter 4 of which BPS working is described. Ladies and gentlemen, inspired by DOP and PW and the Government of India policies, BPS has digitalized its work to be paperless. However, we are still printing monthly news magazine, Bharat Pension Samaj, as quite a number of our members and affiliates are still not comfortable with online copies. Recently, BPS has resorted to interacting and spreading awareness about important OMs and procedures like DLC generation, and through videos, even our issues, demands, representations are now being highlighted on social media, Facebook, Twitter, YouTube, blog, WhatsApp group, and email, etc. I am thankful to my colleague, Joint Secretary General, Mr. Amia Raman, for his initiative and shooting awareness videos and also highlighting our issues, demands and representations on social media. I am also thankful to Sri Ashok Sabharwal, General Secretary of our affiliated EIC Pensioners Association, and to staff member Ms. Renu Sharma for furthering our efforts in this direction. Today I once again call upon BPS MC members, affiliated associations and members to adopt and follow social media platforms and to share more and more all BPS posts on social media with favorable comments to make these posts viral so that these are taken note of by the concerned agencies of the Government of India. Now, few success stories I narrate to you. Out of many, a few are being mentioned here. Number one, as a result of our pleading before Rajya Sabha Parliamentary Committee of Petitions, CGHS room rent, ward entitlement and rates of 36 radiological imaging investigations have been revised upward. We expect that package rates will also be revised soon. Number two, in June 2022, due to heavy pendency of bills, several CGHS private and paneled hospitals had stopped cashless service to CGHS beneficiaries. On our representation to the Honorable Health Minister, immediate action was initiated by him to clear 1400 crore pending bills of private CGHS paneled hospitals, and the bill payment system was also streamlined to ensure prompt payment in future. Number three, taking cognizance of our several representations, Departmental Related Parliamentary Standing Committee on
personal public grievances in their report 110 and 113, and department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare report number 143, para 3.9, gave several favorable recommendations such as at par medical facilities in all central government health schemes for pensioners need to be ensured. Additional quantum of pension on attaining age of 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 and 100 years of age. Raising FMA to rupees 3,000 per month, MACP with effect from 1/1/2006, one notional increment to those retired on 30th June and 31st of December, appointment of pension ombudsman on the line of bank ombudsman, bringing pensioners of all central ministries, departments and disciplines within the jurisdiction of DOP and PW. Revision of CGHS rates comparable with market rates. These are the recommendations of the parliamentary committees. BPS has been pursuing the implementation of these recommendations as per our information. Issue of raising FMA, additional pension and notional increment to those retired on 30th June and 31st of December is pending with MOF. Revision of CGHS rates is underway. Number 4. Railway Health Unit at Gurgaon. After years of representations, finally a full-fledged railway health unit with diagnostic facilities has come into being at Gurgaon railway station. Number 5. Sri Abhay Nandan Singh retired on 30th June 2013 from Railway Mechanical Workshop, Gorakhpur, due to paralysis. In spite of submitting life certificate, his pension was stopped by Bank of India, Bhagwanpur branch, Vaishali, with effect from December 2017. BPS Joint Secretary General and Working President, Northeast Railway Pensioners Association, Sri Amiya Raman, took up the case after protracted correspondence with concerned authorities. The pensioner has been paid pension arrears of rupees 16,75,444 in August 2023. 6. Srimati Padma Ben Natwarlal Modi, CDA pensioner, a 77 years old widow. Her pension was stopped by Bank of India, CPPC, Nagpur, with effect from 1/3/2023 on the plea that there is a mismatch of PPO number in DLC. The case was taken up by BPS Secretary Shri D.D. Mistry on 12/9/2003 with Controller of Communication Accounts, Gujarat Telecom Region, Ahmedabad, who acted promptly and settled the case. The pensioner has been paid pension arrears amounting to 1,37,331. 7. Dr. Anil Kumar Mukherjee, ex-Deputy CMO, Northeast Railway, Bank did not take cognizance of the 7th CPC revised PPO and continued old rate of pension till his death on 30th 1/2003. The case was taken up by JSG BPS Sri Amiya Raman. SBI credited the arrears of 17,720,000 to the widow family pensioners account. 28. Bhagyama, illiterate widow of Head Constable RPF, late Sri Thammappa under DRM Bangalore, who died on 5/1/2007 while in service. Family pension of his widow, MS Bhagyama, was not updated as per 7th CPC PPO by Syndicate Bank, and she was being paid 10,000 per month instead of 13,376. A grievance was lodged on CPN Gram
Consequently, her family pension was updated to 13,376 by the bank, and she was also provided with a attested copy of the 7th CPC PPO. 9. CGHS facilities extended to UT pensioners, while MOH and FW letter dated 13/11/2023 credit goes to our affiliate LSPPA, Lakshdeep. Earlier, the government of India had said that UT employees and pensioners are not central government employees, and they cannot be provided the cover of CGHS. With the effort of affiliates and BPS, this situation is reversed. On this 13/11/2023 only, Ministry of Home and Ministry of Health and Family Welfare has issued an OM that CGHS facilities are extended to all UT pensioners except Delhi and Chandigarh. Why Delhi and Chandigarh has been excluded, that we have to look into, and we will take appropriate action for them also. Ladies and gentlemen, BPS, besides seeking redress from the government of India in deficient area, BPS and its affiliates help hundreds of family pensioners and their siblings every year. Several hundred people are being assisted, and their grievances are being resolved by BPS and its affiliates. We work together with our affiliates, and both together we have been helping pensioners in a big way. And we propose to continue it. At the same time, BPS has not overlooked the welfare of NPS subscribers. Here, there is little disagreement with Comrade Shivgopal Mishra ji, who are straight away asking for scrapping of OPS. See, earlier on BPS demand, family pension was included in NPS, and then the government subscription was raised to 14%, though our demand was for 16%. BPS has been demanding that either government guarantee 50% of the last drawn salary as pension to the NPS subscribers or revert back to old pension scheme. As per our reliable sources, issue is under active consideration of the government. Now the way ahead, how we propose to go work ahead. In our effort for this redressal of pension healthcare issues, BPS will continue the policy of advocacy and persuasion to create supportive environment in government agencies and PDAs. Number 2, social network platforms are highly effective for pressuring the government to act on issues related to senior citizens and pensioners. Earlier, our issues highlighted on social media were picked up by the various Rajya Sabha Standing Parliamentary Committee, including the Committee on Petitions, who gave favorable recommendations. Thus, we will continue using social media platforms like YouTube, Facebook, Twitter, etc. to represent the concern of pensioners to the government. I request our affiliates and members to write supporting comments and share BPS posts on social media more and more with their groups, friends and friends of their friends to make these posts viral. Number 3, we will do everything possible to change the wrong narrative that the government pensioners are well-to-do and a happy lot.
This is the general perception in the society, but which is not true. Resolutions which will be passed by the 68th AGM, each resolution will be processed separately with clinching justification, will be sent to the concerned authorities and will be posted on social media platforms. A drive to increase membership affiliated associations will be launched. In addition, following drives will also be launched with the assistance of MC members and affiliated association and individual BPS members. Number 1, training of members and affiliates in generation of digital life certificate. Number 2, training members affiliates in processing grievances through CPN Gram. Spreading digital literacy and awareness about initiatives to ensure ease of life. Dissemination of information in real time. Processing demands seeking government assistance in deficient areas. These are the proposals we plan to take up. We work according to which we want to work in the future. Thank you very much. I place my report on the table of the House for discussion in after lunch session. Thank you very much. Jai Bharat. Now, ladies and gentlemen, our working president, Mr. M.M. Kapoor, he is suffering from thalassemia. He had a strong desire to come today and address this house, but suddenly his physical situation gone bad and he is not able to come to this house. However, he has sent a message which Mr. V.K. Taneja, our editor, will read out to you. We pray for his early recovery and his well-being. Thank you very much. Mr. Taneja. मंच में बैठे हुए सभी पदाधिकारी गण एवं मेरे भारत पेंशनर समाज के सभी सदस्य सारे भारत से आए हुए को मैं स्वागत करता हूं। Dignitaries on the basis of Sir Shri K.R. Gangadharan ji, Shiv Gopal Mishra ji, Shri Shiv Balasubramaniam ji, Madam Saraswati Padmanabhan, delegates, various pensioners associations from across the country, ladies and gentlemen. I personally and on behalf of the Bharat Pensioner Samaj express my profound gratitude to you for having come all the way, braving all odds of the journey and weather to grace 68th AGM of BPS with your benign presence. BPS was founded in 1955 by a group of eminent personalities headed by Justice retired Shankar Saran of Allahabad High Court, with the sole aim of creating a network of pensioners community to inculcate the feeling of oneness to help each other in the times of need, seek assistance and removal of grievances from the Government of India in deficient areas. Wherever needed, I would not go into the details of its growth from time to time at national and international levels, as this has been explained at length by Secretary General Shri Maheshwari ji in the booklet printed captioned 68th AGM. I am associated with BPS since June 1996 and from the AGM of that year, a member of the managing committee with one or the other assigned duty, the longest being editor of its monthly journal, Bharat Pensioner, for almost a decade. Of course, those were the days of simple, conventional working style. As on date, BPS has spread its wings to the rules
improved grievances redressal mechanism and submission of life certificates. The visit to BPS by Government of India Secretary, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Shri Nivas in July 2023, along with Additional Secretary Shri S.N. Mathur and other senior officials, is a glaring example whereat the Secretary took keen interest in going through the working module of the BPS and later in his address recapitulated the salient features of various steps taken by Government of India, including apps that would go a long way in making lives of pensioners, family pensioners, less strained and avoid visits to PDAs and other offices concerned for resolving their pension-related problems. Additional Secretary Shri Mathu explained at length about setting of camps in various cities for DLCs. August audience in front of dais are an ocean of knowledge and experience gained during their service. They are here to tell the help rendered to the pensioners, family pensioners and siblings. We can succeed only when we speak in one voice and stand united in the resolving pending demands issues. Some of these are improvement in health care schemes, early settlement of medical reimbursement claims, setting of 8 CPC, cost indexing of occurred formula and changes required in the definition of family with inclusion of dependent parents and 2 children to be treated as single unit, each in 6 units as against 3, and inclusion of electronic units such as smartphones, laptops, computers necessitated due to advanced technology digitalization and AI, extending benefits of favorable judgments of every nook and corner of the country, and has over 10 lakhs membership through its affiliates and pensioners associations. BPS is working in close association with Ministry of Personnel and Public Grievances, Government of India. BPS has helped in revision of pensions from CPC to CPC, improvements in healthcare facilities, grant of FMA, providing social security in old age, removal of anomalies created during pension fixations, increases in the rate of pensions, etc. BPS was the first to be called for oral evidence by the 7th Central Pay Commission, and its delegation was led by Secretary General Shri S.C. Maheshwari ji, with myself as one of the delegates. Delegation had very fruitful and convincing discussions with full justifications and succeeded in 7th CPC, recommending notional fixation of revised pensions, uniform fitments for all pensioners, merger of postal dispensaries with CGHS, and merger of health schemes CGHS, RELHS, and ECHS, creating a strong healthcare network. Counting of DA as part of BP for the calculating pension was agreed to by the 7th Central Pay Commission, but later did not find mention in the report released for reasons unknown. Similar was the fate of our demand for starting additional old age pension starting at an early age rather than existing 80 years and granting 100% additional pension on attaining 90 years as 100 years of age was considered to be illusory. In case of fitment formula for pre-2016, retirees, pensioners had to struggle a lot for what they are getting now. BPS is grateful to Government of India for its flexible attitude towards the pensioners, grievances and amended streamline. Various tribunals courts to all similarly placed pensioners restoration of commuted pension after 12 years, additional age-related pension at 65 years of age, notional increment to those retiring on 30th June / 31st December, increase in FMA, pension be net of income tax, besides grievances related to BSNL, /DOT, ABs, /SBs, and state governments pensioners need early salvation. I would appeal to all members of BPS to enroll new pensioners
comparatively younger in age who willingly come forward to take over from the existing MC members who are 80 plus in a phased manner. My appeal to MCs of all the pensioners associations to do their best for the welfare of the pensioners and set an example. I am thankful to all the donors for their liberal donation. My thanks to our Joint Secretary General Amia Ramanji, Secretary D.D. Mistry ji, Secretary T.V. Surya Prakash ji, and Editor V.K. Taneja for their sincere assistance and support to Secretary General Shri S.C. Maheshwari ji, whose untiring efforts coupled with dedication and devotion has raised the stature of BPS to the present level, adopting new concepts, latest techniques, etc. I wish all pensioners a smooth sailing in the evening of their lives. Tamso Ma Jyotirgamay. Jai Bharat, Jai Hind. Namaskar, Sadar Pranam. Thank you, Taneja ji. Thank you very much. Now I am requesting Dr. Gangadharan sir for his lucid and very thoughtful speech. Please, sir. Good morning to all of you. So on behalf of the All India Federation of Pension Association, I am happy to honor Dr. Gangadharan, who is also from Chennai. Yeah, come here. Mr. Balasubramanian. You photo. Respected Mr. Chauhan, President BPS, respected Mr. Maheshwari, General Secretary BPS, Mr. Gopalji. I've been seeing him for many years in a lot of these meetings. Every time I come, I see him every year. Mr. Balasubramaniam, again I've been seeing him a lot of annual general body meetings of BPS. For the first time I'm seeing Mrs. Saraswati. And sorry, Miss Saraswati, thank you. Saraswati is known to me also. I think Mr. Maheshwari is known to me for almost 30 years of time. Saraswati is 10 years and others over a period of time. I like to express my deep sense of gratitude for inviting me to be talking with you for about 15 minutes time I don't want to talk about pension because you have experts on pensions, but I want to place a deep sense of appreciation for the work that BPS has been doing. When I look at the report, I was going through the report that's been given to me, I was reading this. The hard work that particularly the team that is managing, I don't know how many of you can really appreciate it. Particularly talking about advocacy and persuasion. Let me tell you, I can't do that. I will not be able to do it. Because one side you have to be aggressive, other side you have to be thick-skinned. Seriously. Getting the secretary to your office is not something that everybody can achieve. And all of you who have come to participate in this event, you must express tremendous amount of gratitude to the leaders of this BPS. It is so true. I admire Mr. Maheshwari because I've seen him walking fast and today he's walking with a walking stick and yet he's walking. I think I told him,
I wish to see you every year like this till you are 100 at least. Maybe he is not able to walk straight with a walking stick, maybe a little bent, but I would like to see him because he is, for me, he is a big inspiration. I don't think I can follow him the way that he is walking. I can't walk on his footsteps at all, but I still admire him. The reason I agree to come for this meeting is only because of Mr. Maheshwari is talking to me every time I'm doing it. Select a compliment, and nice to see Mr. Balasubramanian every year, and along with Mr. Gopal Mishraji. I always love Mr. Gopal Mishraji's talk because he brings in me more energy when I go back. That's how he talks. Now I have few things to tell. When you are talking about aging, we are talking about old people. I do not want to talk about pension, as I mentioned to you. I was in a meeting in Madrid in 2002. It was a World Assembly on Aging. I might have mentioned this in the past, but I will still repeat it. Mr. Kofi Annan was the Secretary General of United Nations. And he was delivering the inaugural address of the World Assembly on Aging. And he said something very impressive. I will never forget till I am alive. What did he say? In South Africa, when an old person dies, they say they have lost a library of knowledge. And I want to tell you, once again, I am not praising Mr. Maheshwari for a formality, genuinely. The amount of hard work goes into what you people are doing, and I know Mr. Gopal Mishraji is so influential when he comes from some other city and influential in Delhi, it is not easy at all. And when he talks about the knowledge of old people by Mr. Kofi Annan, it remains very valid even today because we are not going to get this wealth once they are not there. And all of us are born and one day we are all going. That's the truth. But how much of hard work they are doing, how much of acknowledgement that you give is something very important because you all need to acknowledge their hard work so that they are motivated to do more. And you can't expect somebody at the age of 80, 85, keep doing this forever. Only way they can do is each one of you inspire, support them. I think that's very important. I was talking about aging. I was talking about Mr. Kofi Annan. I was reading I read a lot whenever I travel. I've been a very poor student in the school and college, but I enjoyed reading a lot. We are in 1947, the longevity of India was 27 years. Today is past 70. And I'm sure every one of you sitting in the audience of 60 plus. And now we are talking about pension that is touching 100 years. I don't think we ever imagined 20 years ago people will live 100 years in India. And which means 100 years your pension amount increases, but truly what Mr. Maheshwari and team says is so true that that increase is very insignificant considering the cost of everything that is going up constantly. I think the truth is, whatever is the subsidy available, the cost of the gas which was 120, 150 rupees today is 1000 rupees. I don't think your pension revision is anywhere able to meet those kinds of demands. But the fact is, still you have to maintain some essential quality of life. I think that's what the BPS is trying to do, is to see that you are able to do that. Number two, when you are talking about longevity, which was 25 years in 1950 and 70 today, unfortunately for whatever reason, women live longer. Women live longer. Now, I don't want to use the word unfortunate, women live longer. My tendency to use the word unfortunate came in for only one reason. When they are alone, when they are widowed, I can tell you the amount of pressure that is mounted on them by the families. Yes, I belong to a Brahmin family. If an old lady, a lady became a widow,
they were all shaven head. I don't think I want to tell you the story because you all know better. So that kind of a vulnerability is a major challenge all of you will have to encounter if you have not made provision to protect them after your time. Let me tell you, I must tell you, my father worked in railways in Paramore. My brother is invalid. He's 71 years. He is still paid as an invalid person pension by the railway pensioner, railway pensions. Now, for me, personally, I don't require that money. Personally, I don't require that money. But my elder brother who's 80 years says that's the dignity that he enjoys. That is a right that he enjoys. I think it's very important for you to bear in mind, do not neglect your personal ladies, women at home, because it's a responsibility for you to provide for it. Third, I'm going, points that I thought is relevant. There are a lot of talks in this country going about elder abuse. A lot of old people are being neglected. Please understand, internationally, globally, people who are abusing the old people are family members. It is not outsiders who is abusing the old people, it is the family members. It is documented. Enough research is done all over the world. Family members are the major abusers. So we are all talking about, my brother recently passed away due to cancer. He was in cancer hospital in Madras. He was getting treated. He wanted some money for treatment. So he was trying to withdraw the money. Somebody in the meanwhile came in online, took the entire money from his bank. All his pension, whatever money that he had running to over 14 lakhs was completely swiped off. And fortunately for us, all of us could help him, overcome that. But let me tell you, that man died being cheated. This is being cheated. This is an inadvertent mistake that he committed. And understand, the man was dying in any case because of esophagus cancer, but that's what happened. The question is, please understand, this is an external threat. But within the family, you have a threat. And that is where you have the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act. The act has been passed primarily to ensure children don't abuse the parents. That is the reason. Understand, the intention of the act is to protect you from your own children. That's very unfortunate. Because culturally we are very strongly bound with families. Not to be cheated by the families, but unfortunately the act has come in. The primary act is not to prevent outsiders preventing abuse, to protect you from your children. Now, I personally feel very sad that there is an act to protect me from my children. I feel very, very bad. We are all talking about human rights, but right does not exist in your own family. So I was talking to one of the ladies in Nairobi 4 or 5 years ago. This lady very interestingly told me something interesting. He says, South Africa is a typical African country, drinking is very common. So he said, I lost my husband because he was drinking all the time. So my son is a PhD working in Kenya University in Nairobi. He is teaching, but he doesn't go for teaching because most of the time he is drunk. The second son was studying in the college, but he was not going to the college regularly, taking money from the mother all the time. And she says, enough is even, I am not going to give them any more money. Unfortunately for her, she had a paralytic stroke. Again, luck would have it, she was bedridden for 3-4 months' time, and she decided she will fight her life out. This is a very true case. Any of you want, ask me, I'll send you the video. She struggled. She said, I will not struggle like this, let me come out of it. So one day with the help of an assistant, she walked. And she found a lot of kids practicing running races and things like that. She said, I will become a runner. Can you believe today she's running? And she's running what? Not small. 50-kilometer run. She's running. And when I met her 4 years ago, that is just before the
COVID time, she requested me to connect her to some people in New York where she was going for a long run. She wanted some help to stay. So I connected her. Let me tell you, the Pepsi sponsored a trip to New York, and they have given her 20 liters of bottled water for her lifetime. Understand, this is not old person who's healthy, but a person who, for all practical reasons, we think a old person who's got a paralytic, they give up life. They get demotivated. But here is a lady who has come out of it. I am very sure there are any number of cases in this country whom you can pick up and then say they're all living legends. I think we can really do that. So look at this case of hard work. And please understand, that's what you're going to pass it on. Last night I was talking to one of the doctors from USA. I had come with his wife, and I've known him for the last 30, 40 years of time. So he was looking for an alliance for his son's marriage, very affluent family. And Ganga, I want to get my last son married, third son. He was a postgraduate from well-known John Hopkins on call. He studied his MD. And a very affluent family in US and in India. They're living in Merali. I mean, I come there sometime, I stay with them. He says, I'm not able to find a girl for the daughter. And what kind of a budget he is looking for the marriage? 50 crores. Marriage expenditure is 50 crores. Okay, they live it in style, they hire a hotel, but it's okay, they can affluent. But he says, I'm not able to find a girl. That's something fantastic for you to understand. We say poor people don't find it, but rich man is not able to find. And he said, how many girls this boy has seen? He says, he has seen so far 10. Either you reject, or your wife rejects, or the son rejects. The son rejects everything. Why? I asked him why. Then he picked up his mobile and showed me 8 to 10 girls. Pictures. He says, they're all modern girls wearing dresses of a different kind. He says, we are all, Agarwal community people, traditional people. We can't do that. The culture is changing. The way things are doing is changing. All of you need to understand that I am old, I must be respected. Forget that word, respected. Respect cannot come because of your age anymore in this world. It will come the way that you conduct yourself. I must be sure to connect with my grandchildren and equally connect with my children. The moment I have a disagreement with my adult children, the grandchildren won't care about you. And all of us have opinions to give. All of us say, don't do this, don't do that. Those things don't work anymore. Those things are changing. And rest of the life that we're doing, somebody used the word towards the evening of our lives. Yeah, if you're talking about the evenings of the life, that's a time to really be pleasant and not be cynical. I remember olden days, people used to say, when an old man comes, run away. Why? He will tell the same thing again and again every day. I think you have to move out of that, what is called, prejudices against elderly. I don't want to keep talking more. I just gave an overall picture. How do I change? The question is, can I change? Can I keep pace with that? So I said, okay, let me do something more useful. So Saraswati was asking me, what do I do? I said, I do talk like this in several forums. I interact with people. I interact a lot with kids. And I would like to close this with a story that I always told in the past. I'll repeat it for the benefit of people who have not listened to it. Mr. B.B. Naidu. I think some of you would have heard this story. Let me tell you the B.B. Naidu. B.B. Naidu's story is a very interesting story. He's a retired government pensioner from Signal and Telecommunication in Secunderabad. And he was posted to work under Hitler's regime in Berlin. He worked under the, Hitler's secretariat in the Signal and Telecommunication department. And he came back. So what did he do? Why did he come back? Very, very simple. He was young. He wanted to stay back in Germany. They would not let him stay in Germany because he's a non-German. So what he did, he picked up a young girl and requested her to say that he is her husband. And that girl, we don't know what she told,
Next day they came and picked him up, put him in the aircraft and said, get back to India. Your baggage will come next trip. So that is the naughty story of Mr. Naidu. Now he came and met us when he was 90. This is in 1995. So in an audience like this, all governor was sitting, of Governor Andhra Pradesh. He was sitting in the audience, so we introduced Mr. Naidu as a person who is 90. Very rarely in 1994, you won't find many 90s. So the newspaper media said, we want to interview him. Can you ask him to talk to us? So we gave him a place and asked him to sit. Let me tell you, our inaugural program of the International Day of Older Person 95 was devoted to Mr. Naidu. Only one question he answered and that was, the whole interview was over. He said, what is the reason behind 90 years? You are so healthy, you are walking independently. So he said, I don't mix with old people. I don't want to be seen in the midst of old people. I want to be in the midst of young people. First point. The second point is that I don't want to be in the midst of young men. I want to be in the midst of young girls. The third point that he mentioned was, when I am sick, I go to the doctor, but do exactly opposite to what they have told me. And fourth, there's nothing called lunch and dinner. It's all bi-hourly small quantity of food. Okay. 4. Let me give you why those 4 reasons he gave. First, why I don't want to mix with old people. He says, I am healthy. If I go to another old person, he will say he's having a neck pain. Then in the night, I will have to go and check whether I have a neck pain. There is no neck pain, but I will go and check. So therefore, I don't want to be in the midst of old people. And like that, he gave a lot of examples. Why do you want to be in the midst of young girls? Now, he invited us to his house. So we went to his house in what is called economically weaker section housing in Hyderabad, Secunderabad. We were shocked to find there were about 12 girls. Young girls, college, school-going girls. He said, every year I bring 12 girls like this from villages. I pay their school fees. I get them uniforms. I feed them. I ensure that they celebrate all the festivals. In turn, they will give me the bi-hourly small food. As simple as that. He says they give me the energy. So when people said I will be in the midst of girls, people mistook him. But the truth in life, he says they give me the energy. Third, doctors. He says today doctors can't be trusted. I'm sorry if there are any doctors. I'm talking about what Mr. Naidu said. He says you can't trust them because when you go to them, they ask you to do so many investigations. So that's a third point. And the last point that he mentioned was bi-hourly food. Let me tell you, I have a mother-in-law at home who has come from Bombay, staying with us for the last 1 month time. I think I have told you, she obtained her PhD in Sanskrit at the age of 85 from Bombay University. She comes and sits there. Now I am advocating, she is having severe stomach problems. Last 1 month time, I have advocated bi-hourly food, and let me tell you, she is doing quite well, God willing. I think these are all the small practices I thought I will share with you. Thank you very much for giving me an opportunity. I'm sorry if I have taken a little longer. Thank you very much once again. Thanks. Thank you very much, sir, for your beautiful lecture. Now, I am requesting to our beloved Comrade Shri Gopal ji Mishra. सर से एक निवेदन है, मैं रेलवे से हूँ, तो वो मेरे बहुत चाहते हैं. सर एक निवेदन ये था आपके लेक्चर के पहले कि आप हमारे लिए जो फिक्स मेडिकल अलाउंस में जो कुछ डिसीजेस है सर, क्रॉनिक डिसीजेस, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी करने का कुछ काम करेंगे सर. और मैं चाहता हूं सर कि चिट्ठी लिखने से काम नहीं हो पाएगा. आप जब डीजी के पास जाके बैठेंगे तो आप करके लेके आएंगे सर, क्योंकि अल्जाइमर और ये ग्लूकोमा और ये जो पार्किंसन ऐसी जो बीमारियां हैं सर, मेरे जो पेंशनर साथी है जो एफएमए लेते हैं, उनको लग रहा है कि वो गलती कर रहे हैं. तो सर इसके लिए आपको कुछ करना होगा सर.
Thank you, sir. Comrades, on behalf of the All India Federation of Pensioners Association, I am having a great pleasure in honoring Comrade Shiv Gopal Mishra, President NCCPA, and I want you all to bless him that they are all railway and central government pensioners, central government employees are going to take a ballot for strike. The ballot for strike is to get back the old pension scheme. So let us all give him a big hand, that assuring him that we are all behind him in the struggle to come. Thank you. Thank you. Long live Comrade. Thank you. Thank you, Bharat. The President of BPS, Chauhan Sahab, who is presiding today's 60th Congress, मैं अगर इनको पेंशन पुरुष कहूँ तो बुरा नहीं मानेंगे आप। ऐसी माहेश्वरी जी, जोरदार तालियों से अगर आप इनका इस्तकबाल करें तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। डॉक्टर गंगाधरन जी, मैडम सरस्वती पद्मनाभन जी, बाला सुब्रमण्यम, the delegates in the hall, sisters and brothers. मुझे बहुत खुशी है आज आपके बीच में आने से, and I am very thankful to my elder brother Maheshwari ji that he always gives me opportunity to meet all of you. I really regret my absence in the your last meeting in the Nagpur. I had my program to come, but suddenly TOPT has fixed a meeting on the same day. So I regretted, but I requested my Assistant General Secretary, who is also the General Secretary of the Central Railway National Railway Mazdoor Union, that you go and attend that meeting, and he was there. साथियों, भारत पेंशन समाज is a institution. ये कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और मैं इसके बारे में 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि छतों पे जलते दिए कब के बुझ गए होते। छतों पे जलते दिए कब के बुझ गए होते। ये बीपीएस ही है जो हवाओं के रुख बदलता है। ये बीपीएस ही है जो हवाओं के रुख बदलता है। If minutely anybody goes in your report, they will find that you have brought many changes in the life of the pensioners. And that was your continuous sustainable effort that have brought the much more happiness in the life of our pensioners and family pensioners. तो मैं आपको, आपके संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये संस्था इसी तरीके से दिन ब दिन तरक्की करती रहेगी and the more and more people will join it. You are a free, independent and democratic organization. So there is no bar. Anybody can join you. You have not put any restriction
in joining the BPS. As a central government pensioner, as a state pensioners, as a pensioners anywhere in the country, our worry is about the policy of the government. Because government is drifting towards the capitalistic society. They are leaving the path of the socialistic pattern. And that was the reason that in the January 2004 they brought the new pension system. Otherwise there was no need. They simply wanted to take money from you, contributory pension system should come, the government contribution should also be added, and the total money should be given to the corporates and the capitalists of this country. तो आप रिटायर्ड लोगों के साथ मजाक करें, ये अच्छी बात नहीं है। और आज खाली अकेले हमारे भाई हैं जानते हैं कि only in the railways there are 9 lakh employees who are coming under the new pension system. They are young boys and girls, they are worried for their future. Now people have started retiring, those who are coming under the new pension system. The people, those who are retiring from the 30,000 basic pay, they are getting 516 rupees only. The loco pilots, the basic pay, they are retiring on 56,000 rupees. They are getting 2,826 rupees. So, what is this? This is a pension. We have given a list, not only from the railways, but from the defense, from the postal, from other countries to the cabinet secretary, and ask them that can anybody survive with this meager amount? So everybody, when we talk to them, they used to be surprised. But simply feeling surprised will not going to resolve our problems. And that is the reason we have requested all the people in the country, those who are suffering with the cause of this new pension system, as well as those who are covered under this scheme, come on one platform. There is no issue of the leadership. Anybody can take leadership. But for God's sake, come on one platform. And we have been able to bring at least 36 organizations of the central government employees, of the state employees, of the teachers, the corporations, and the pensioners on one platform. And I am very thankful to the BPS that many of you have come to join our rally, mega rally, on 10th of August in Ramlila Maidan, when a historical rally of the central and state employees was there. So there are many pensioners, they joined us. And not only joined, on behalf of the pensioners, they assured us that if there will be any struggle, then they will be in the forefront. They will face the bullet and lathis of the government, but they will save their youngsters and they will bring back the old pension scheme. So I salute you all. आज आवश्यकता है इस बात की कि आप हमारी इस मुहिम में हमें आशीर्वाद दें, और मैं आपके आशीर्वाद से आपको इस बात का भरोसा देना चाहता हूं कि सरकार चाहे जितनी मजबूत
और चाहे जितनी कठोर हो, हम उसको घुटने के बल लाएंगे, पुरानी पेंशन बहाल करा करके ही मानेंगे। ये बात साफ तौर पर समझ लेना चाहिए। माहेश्वरी जी हमारे बीच में है, 60, 68 और 74 की हड़ताल उन्होंने देखी है, देखी नहीं, लड़े। इंदिरा जी को कोई छोटा मोटा नहीं समझता था। Everybody says that she is our lady, and what she has done with the central government employees, particularly with the rail employees, everybody remembers. We cannot forget that. तो अगर इंदिरा जी झुक सकती हैं, तो कोई भी चाहे जितना बड़ा तानाशाह हो, वो झुकेगा जरूर। ये बात साफ तौर पर समझना चाहिए। और अभी तो हमारे साथ ये तमाम युवाओं का बल है जो यहाँ बैठे हुए हैं। You all are the young persons with the varied experience. My humble submission is, my request is, that we are fighting a battle which is utmost required. Where our youngsters will go, they will ask questions from us. That when we were in trouble, knowing fully well why you people have kept silence. So we are not going to keep silence. Up to and until there will be restoration of old pension scheme, or the benefit of defined pension scheme will be given to our youngsters, we will not keep silence. That is our motto and that is our objective. Comrades, as I have told you, that the policy of government, I will not say this government or other government. Unfortunately, the major parties on this, those who are ruled, they have the same economic policies. They have always promoted privatization. They brought the privatization in the field of education, which is disastrous. Only those who have money, only their children can read. They can go in good schools. Those who have capacity to pay. The fifth pay commission was such a pay commission who supported us. Justice Sri Krishna was a great person who heard us. When we went to him with 20 rupees and 25 rupees slips, this is the education allowance we are getting. He wondered. And immediately, he agreed to our demand. So today, at least, we are getting some money. 2,000 rupees at a children education allowance. We are also getting the hostel facility. But even then, the education is becoming so costly that at least the government employees, those who are sending their wards to any engineering college, MBA college or some other college, they are simply cutting their daily needs. Otherwise, they cannot get educated their wards. The similar situation government brought to privatize the medical institutions. Today we are facing the maximum problem only because they recognize the private hospitals. Now nobody likes the government hospitals. Sitting in my office, at least I can say that I have become one of the OPD. Every day I am getting 10-15 persons, those who will come from far-flung places, and they used to come to me. I want to go to Medanta, I want to go to Apollo, I want to go to Fortis. When I say that similar facility I have in our central hospital, why don't you go? They say no. I have been referred to Delhi, and now it is your duty that you get me referred to some private hospital. And those private hospitals are very cheat. They are cheating to the government.
They are filling the coffers of these middlemen. And our all pensioners, they are also feeling the pinch of that. You bring whatsoever scheme is there. Brother Maheshwari, he always talks to me. He says that, why don't you bring for the railwaymen, instead of the RLHS, why there should not be CGHS? Then I used to fight with him. You know, Baba, don't go to CGHS. We are working for the CGHS also. And the CGHS people, they are always complaining about the CGHS facilities. So there is problem. We agree with you. You have given in your chart of demand also. And that we have also raised with as agenda item with the health ministry. Many of things we have got the improved also. But the problem is that when you are playing in the hands of the capitalist or capitalist-made institutions, then you will fall prey in their hands. When there will be emergency, they will give preference to the persons, those who are having money in their pocket. They will not prefer any government employee. We have seen this in the COVID. And in the COVID, I can say the only people could be survived because of the government hospitals. So there is a need for a continuous campaign for the private, not for the private institutions, for the government hospitals. We should improve our hospitals. We should put all our energy so that our pensioners should get the proper benefit. We have got the orders issued from the DOPT as well as from the Ministry of Health and Family Welfare that the pensioners will get all the opportunities which the serving government employees they are getting. But we are getting? No. Even where I can say the organized labor is there, recognized federations are there, there also they are not getting the similar facilities. Some small dispensary, some small portion has been opened. But we are trying that all the pensioners should get the similar facilities. And they should get the treatment at their need. I agree that उम्मीद से जो उम्मीद थी वो हमारी पूरी नहीं हो रही. हम सोच रहे थे कि उम्मीद से हमारी उम्मीद पूरी हो जाएगी, लेकिन वो उम्मीद हमारी उम्मीद पूरी नहीं कर रही है. सीजीएचएस में भी वही प्रॉब्लम है. बिल्डिंग है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो फार्मासिस्ट नहीं, फार्मासिस्ट है तो दवा नहीं. तो जो एक मेडिकल सपोर्ट चाहिए एट द एजिंग पार्ट ऑफ द लाइफ, दैट वी आर नॉट गेटिंग. और हमारी सबकी यही जिम्मेदारी है कि हम इस सवाल को लेकर के लड़ने का काम करें. आई एश्योर भारत पेंशन समाज, they are a guiding force for us. Whatever issues you have given us in the past, they are part of our agenda of the JCM Standing Committee or the National Council JCM. I am fortunate that day after tomorrow, we were going to submit our agenda for the National Council JCM. And in the meantime, I got this report and the resolutions. You will find that today and tomorrow we will work on this, and when Monday we will be submitting our agenda for the National Council JCM, you will see that all important issues will be a part of agenda of our National Council JCM, this I can assure you.
rules that every year there should be minimum 4 meetings of the JSM staff side with the Department of Pension and Family Welfare and Pension Welfare. But 2 years you can say, okay, it was a COVID year. After that also, it has not been started. When last time we raised this issue in the standing committee, they said we will call immediately a meeting. But till now, there have been many issues which have been almost decided in the National Council JCM or the standing committee. For example, commutation. In a standing committee, it was given assurance that the issue has been finalized and the commutation will be in the 12 years, will be done. But after that, when even by agreeing the expenditure ministry, the matter was made to Madam Finance Minister, some query has been made and the issue has been again reverted back to the Ministry of Expenditure. FMA, they said there is 100% agreement for the 3,000 rupees. But up till now, गंगा जी जो है वो शंकर जी की जटाओं में ही है. And we have to become भागीरथ. आपको भागीरथ प्रयत्न करना पड़ेगा. But I am sure कि आर्डर निकलेंगे, बहुत जल्दी निकलेंगे. 6 जनवरी को हमारी नेशनल काउंसिल जेसीएम की मीटिंग है. मुझे लगता है कि उससे पहले ये आदेश आपके सामने होंगे. कम्यूटेशन का मामला भी उससे पहले रिजॉल्व होगा. आई एम वेरी श्योर. Otherwise, they know that the music will be faced by the cabinet secretary. When P.K. Sinha was the cabinet secretary, we brought an issue that there are many issues where if we could implement that in rem, not in persona, the orders of the Supreme Court and High Courts, at least lot of money will be saved from the poor employees and the pensioners. And somehow, Cabinet Secretary 100% agreed with that. It was minuted in the minutes. But he retired and the interpretation was changed. And it was changed in such a way that what has been agreed, everything has been become baseless. That's why you are today talking of the notional increment from the June and from the January. Otherwise, there was no need. And now the issue is that issue has been completely legally settled. Supreme Court has said, nothing doing, you don't force everybody to come to the court. Even then, they are sitting and looking towards the Ministry of Law. Okay, something should come from there. So this is the situation. You have demanded for a grievance handling machinery. They always talk many words about the स्पर्श. स्पर्श तो ऐसी चीज है जो छूने से महसूस होती है. ये तो हमारे लिए मृग मरीचिका है. आप उसको छूने की कोशिश करते हैं, वो हमसे दूर चली जाती है. There is no स्पर्श. सीपी ग्राम, फलना, डिगना, पोर्टल, ये वो, कितना आदमी हिंदुस्तान में है जो पोर्टल जानता है या इन सारी चीजों को जानता है? There are lakhs and lakhs of the pensioners who don't know ABCD of these things. I am very thankful to the BPS that you people are trying. Your people are going to people. They are telling to the people. They are actual messenger of the God, I can say, for those people. Those who go and tell them, these are the new changes. You get your PPO revised, you get these things. But what government is doing? They have got no machinery. They simply want to
digitalize the thing. And then our Prime Minister says that be aware of the, what he says, deep fake. कहीं कोई गरबा करके नचा ना दे आपको. Even then he believes in that. These all things are good. We are not opposed to the modernization. We have never opposed. In our industry, we have brought the steam to diesel, diesel to the electrical, now the push-pull technology is coming. So we always accepted the technology advancement. But for that, you have to prepare the people. If people are not getting the benefit, the lakhs of our pensions are deprived of because of this technological advancement, then it is the duty of the government that they must do something so that they should also get the benefit. They are sitting far from places in the villages. How they will know that what changes have occurred? So, comrades, there is a need of a sustained campaign. I salute to our ex-army men, military people, ex-air force people, navy people, that they fought for it for many years. Then government, after agreeing for one rank, one pension, they agreed for that. They are getting or not getting, that is a question. But at least they realized. But they made a pressure group. And that pressure group was not only simply on their demand. They saw that their pressure group can go against them in the elections. That pressure group can function on the political lines. Then only they agreed. We have already said that we are all free, independent and democratic. But if any government wants to crush the government employees to the pensioners, so should we keep silence? We should not think. It is our duty that we must think. We are more nationalist than the people sitting in the ivory towers and with the power in their hands. Our people have lost their lives. In the industry where I am working, 400, 500 people every year, they give their life while running the Indian Railway. In the COVID, our 3,000 railwaymen, they laid their life for operation of the trains. So nobody can say that we are not nationalists. हम राष्ट्रद्रोही नहीं हैं, हम राष्ट्रवादी हैं. लेकिन अगर हमारे साथ अन्याय हो, अत्याचार हो, तो हम इसको आसानी से बर्दाश्त करें, ये बिल्कुल नहीं हो सकता. ये पॉसिबल नहीं है. हम हवा में नहीं बहेंगे, हम जात पाति में नहीं बटेंगे, हम धर्म और संप्रदाय में नहीं बटेंगे. हम पेंशनर्स हैं, हम कर्मचारी हैं, हम एक झंडे के साथ रहेंगे, इस सवाल के साथ रहेंगे कि हमारी पेंशन हमको मिलनी चाहिए, हमारी सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए, और जो इसको नहीं देगा हम उसके खिलाफ पूरे तौर पर जुट करके उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, मैदान में उतरने का काम करेंगे. तभी हम जिंदा रह सकते हैं. सरकार ने बैठाया हुआ है. They have constituted a small committee in the Niti Aayog. They have snatched the pensions from the newcomers. And that committee is not for giving benefits to the pensioners. That committee is how to get out of the pension for these pensioners, those who are not dying because they are getting pensioners. उनके चिंता है इस बात की कि ये बूढ़े मरते क्यों नहीं है जल्दी जल्दी. इनको पेंशन मिल रही है, इनके चेहरे पे बड़ी चमक है, ये कुछ सोचते भी हैं, ये अच्छा बुरा भी जानते हैं, who is good, who is bad. तो इनका कैसे इंतजाम किया जाए? So they have formed a small committee.
Up till now, they have not been successful. But if they will prolong in the coming future, that will also be introduced. Provided we should stand united. आज देश में हमारी रेल में मैं जानता हूं कि we are only 12,26,000, including officers and doctors. And the retired railmen is more than 14 lakhs. It means retired railmen is more than the serving railmen. The similar situation is in the country elsewhere. Maybe state employees, maybe teachers, maybe postal employees, maybe defense employees. Everywhere similar situation is there. They will be in the crores. Suppose if 4 crore retired people are pensioners in this country, and they have only 5 persons dependent on them, what will be their strength? 20 crores. And if 20 crore people, they come together and decide that they will fight against any atrocity with the serving and the pensioners or retired government employees. Can any government survive? No, they can't survive. But our problem is that we are divided into frictions. Now there is a very mushroom growth of the pensioners organizations. Everywhere you go, you will find a new pension organization. And on any invitation, I don't give any chance to go to anywhere. And there I appeal only for one thing, that there is need of the unity. I also appeal here, or many times in the past also I appealed. I know that they are capable. At least I can say that SC Mysore is 100% capable. That let us call all those people, sit together. We will provide you the facility. Discuss with them. Let's have your organization. We have no problem. But for the common issues, we should come on a single platform. We should give a memorandum to the government of India. If they agree, it's okay. Otherwise, we are ready to say that we are not coming to you with the begging bowl. हम कटोरा लेकर के उनके पास जाने वाले नहीं हैं. हम उनसे साफ कहने वाले हैं कि हमने 60 साल इस मातृभूमि के लिए अपना खून और पसीना बहाया है. इसलिए हमारे साथ अन्याय होगा तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, उसका प्रतिकार करेंगे और अपनी मांगों को लेकर के रहेंगे. ये हम उनसे कहने वाले हैं और ये आपको भी कहना पड़ेगा. So let us have a resolution here itself. Take a time-bound calendar for that. We will stand behind you. We will give you full support. But a unity is required. Because suppose in 2024 this government again comes, then they will definitely put their hand on the pensioners. इनके पास बड़े शेखशिली लोग हैं. हमारे सब कुछ खराब हो सकते हैं. उनका आप बुरा मत माने. और सरकार से मैं डरता नहीं. सरकार से मुझे कोई डर नहीं लगता. लेकिन आप तमाम वरिष्ठ लोग हैं, आप लोग बुरा मत मानिए. इनके पास बहुत से शेखशिली हैं जिनके पास कैसे गरीब आदमी को सताया जाए उसके फार्मूले हैं. अब इसको अगर हम लोग भी बर्दाश्त करें, पेशेंट बर्दाश्त करें, तो ये अच्छी बात है. आइए आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है कि वी शुड स्टैंड. और हम एक प्रयास करें कि हम निश्चित तौर पर इनसे जो है वो करें. पीपल आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी. कहते हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. We are the biggest democracy of the world.
But where your democracy has gone? When with a unanimous voice, entire parliamentary committee gave a recommendation that the pension should be raised in after every 5 years. That was a universal recommendation. Please, give them a hand. तो साथियों मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन हर पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि भाई 5 साल पे बढ़ा दो, 80 साल पे बढ़ाने का क्या मतलब है? आपने कहा नहीं हो सकता। हमने तो कहा कि 79 ईयर पूरा हो जाए तो आप इनको दे दो, क्योंकि फिर तो 80 साल आ गया, एक ही साल का मामला है। कहते वो भी नहीं हो सकता, पूरा 80 करना होगा। इनको पूरा यकीन है कि उस 80वें साल में 80% लोग मर जाए। अदरवाइज ऐसा क्यों कहें? इनको पूरा यकीन। जो जिनकी सोच इतनी संकुचित हो, ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करना? ऐसे लोगों से तो लड़ना नहीं पड़ेगा। हम उनकी प्रतिष्ठा में, उनके सम्मान में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, बहुत ज्यादा कहेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है कि उनको अभी भी उनसे कोई लगाव हो, मोहब्बत हो, वो लोग नाराज हो जाए। लेकिन आज का नया बच्चा जो सरकारी उसमें आया है, वो बिल्कुल पूरे तौर पर उनसे मिजाज नहीं मिलता उसका, क्योंकि उसके मन में है कि जिस समय हम रिटायर होकर अपने घर जाएंगे, जिस तरीके से आज हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, आज जो सीनियर सिटीजन हैं, तो एक सम्मान के साथ यू हैव योर प्रेस्टीज एज ए सीनियर सिटीजन इन दिस सोसाइटी, यू हैव प्रेस्टीज इन योर हाउस। आज बहू, आपके बच्चे, जिस दिन पेंशन आती है, मैं देखता हूँ, जिस दफ्तर में नौकरी करता था वो पोस्ट ऑफिस में मिला हुआ, जिस दिन पेंशन आती थी, जिस तरीके से पुराने साथी अपने पोती के, नाती के हाथ पकड़ करके जाते थे, एक हाथ में जलेबी लिए हुए, एक हाथ में चॉकलेट लिए हुए, हंसते हुए, कौतूहल का वातावरण होता था। मैं उनसे पूछता था, भैया क्या हाल है? कहते बहुत अच्छा है, घर में भी बहुत अच्छा है। आज घर जाऊंगा, बहू जो है उसने खीर और पूरी बनाई होगी और भगवान से बनाती है कि बुढ़ा और जिंदा है ताकि पेंशन आती है। लेकिन आज ये स्थिति, तो आपको इस जिनकी पेंशन चली गई है उसको बचाने के लिए हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। और आपकी जाने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं, तो जरा ये भी ख्याल करिएगा कि जो पेंशन बचाने वाले लोग हैं उनकी पहचान करिएगा, समाज में राजनीतिक तौर पर उनके साथ खड़े होने का काम करिएगा। अगर फिर भी आपको यही लगा कि नहीं मंदिर के नाम पे वोट देना है, जो 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है, तो आपका भगवान ही मालिक है। आपका मंदिर आपके पेंशन से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपकी पेंशन बचे, आपके घर के अंदर इज्जत बचे, आप समाज में इज्जत रखें, मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। समाजसेवी मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने कुछ ज्यादा करने का काम किया हो, लेकिन मेरे मन के अंदर जो भावनाएं हैं अगर मैं अपने साथियों के साथ शेयर नहीं करूंगा तो आने वाले दिन में मुझे तो कोई माफ नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि हमारे साथियों को भी माफ करने वाला कोई नहीं है। आज आप जितने लोग यहाँ हैं, मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगा, आप जो अपील मांगे सीधे तौर पे हो सकती है, उसके बारे में चिंता मत करिए। मैं आपका हूँ, आई एम योर रिप्रेजेंटेटिव इन द नेशनल काउंसिल। Whatever your demands, we will go on fighting for that. Time may take, but today or tomorrow we will achieve that. But there are the major constraints before us. Those major constraints is that in future we will remain in the similar place circumstances or not. To my mind, if South governments will come in future, you will not be there. आपकी पेंशन जाएगी, कोई नया कॉर्पस बनेगा, वो कॉर्पस भी अडानी
अंबानी या कोई दूसरे जो लोग हैं उनके खाते में जाएगा। वो पैसा आज नहीं तो कल डूबेगा, और जिस दिन वो पैसा डूबेगा उस दिन आपका दिल भी डूबेगा, आप बेमौत मरने की स्थिति में आएंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसलिए इन द कमिंग फ्यूचर, इफ यू वांट टू रिमेन as you are today, you have to think twice, thrice, and many times. And you have to prepare yourself. मुझे पूरा विश्वास है. All the newcomers, they believe in you. आप उनके लिए गुरु हैं. You are parent for them. आप उनके अभिभावक हैं. आप उनको भी समझाइए कि अपने हक के लिए लो, और फिर आप उनके साथ अगर खड़े होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है पुरानी पेंशन भी बहाल होगी और आपकी पेंशन भी बच जाएगी। देयर आई एम वेरी श्योर। तो आप इसके लिए थोड़ा सा सारा थोड़ा सा आशीर्वाद हम लोगों को देने का काम करें। आई एम वेरी श्योर दैट वी आर गोइंग टू दैट। आपके जितने भी इश्यूज यहाँ पर हैं हमने उनको देखा है, और आई एश्योर यू, जैसे हमने आपसे कहा है कि many of those issues we will include them in our agenda। और मैं और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे और साथी भी हैं यहाँ पर बात करने के लिए। तो मैं एक अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। खासतौर पर बीपीएस के लिए एक बात करना चाहूँगा, वो ये है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर क्या देखना कद आसमान का, फिर क्या देखना कद आसमान का। चाहे जितनी ऊंचाई हो, आपने उड़ान का हौसला बना लिया है। आई एम वेरी श्योर दैट वी आर गोइंग टू अचीव आवर डिमांड्स, वी आर गोइंग टू सेव द पेंशन, वी आर गोइंग टू अचीव द ओल्ड पेंशन सिस्टम। वो इरादा बनाने की बात है। और एक अंतिम बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि इन झरनों के रह गुजर से, इन झरनों के रह गुजर से चमक छोड़ जाऊंगा, इन झरनों के रह गुजर से चमक छोड़ जाऊंगा, अपनी पहचान बहुत दूर तक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे। शीशा हूं, टूट करके भी खनक छोड़ जाऊंगा। इनकलाब जिंदाबाद। Thank you, sir. Thank you very much. Now, I am requesting Madam Saraswati Padmanathan. She is the lead person, Aging Initiative, Tata Trust of India. Please, Madam. सभी को मेरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट 12 o'clock, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा सा डिले हो चुके हैं। सो आई जस्ट वांट टू कीप कपल ऑफ पॉइंट्स। ओके, वी विल लेट On behalf of the All India Federation of Pensioners Association, I honor Madam Saraswati and wish her a long life. So to all the dignitaries who are on the dais and all my senior citizen friends who are as old and as benevolent as my own family members, I'm honored to be here. I think I have to thank Kameshwari ji personally for inviting me. मैं सोच के आई थी कि आज मैं आप लोगों से सीखूंगी। मेरा यहाँ आने का मकसद वही है कि आप लोगों से सीखना है कि आप लोग कैसे संस्था चलाते हैं, किस तरीके से आप अपना काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सो द पर्पस ऑफ माय विजिट इज प्योरली दैट।
I would really congratulate Bharat Pensioner Samaj for the kind of work that you all are doing. Each one of you, आप लोग यहाँ आए हैं, represent कर रहे हैं आपके जो बाकी pensioners हैं, मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ. आप लोग इतना अपने लिए अपने pensioners के लिए काम करते हैं. Fantastic work that all of you are doing. Normally there is this concept of elders for elders. बुजुर्गों के लिए बुजुर्ग. So I think this is a fantastic live example of how all of you are supporting each other and working together. Many congratulations to all of you. I would like to highlight the success stories जो महेश्वरी जी ने बताया. मैं उसमें से एक चीज़ I just thought I should highlight कि among the success stories there was reference to widowed pensioners and उनकी पेंशन के लिए आप लोग कैसे काम कर रहे हैं. I think ये बहुत important काम है. And जैसे गंगाधरन सर ने भी बताया, it is important that all your family members को जो widows रहेंगे, fortunately as गंगाधरन जी said कि women tend to live longer. और हमारा डेटा भी यही बताता है कि women ज़्यादा दिन रहती हैं, biologically they live longer. So please ensure that all the paperwork related for the family members are in place so that it is less difficult for the managing committee to ensure that the pensions are received. Please make sure that all the आपके आसपास के जो भी elderly women हैं, उनको अगर तकलीफ हो तो आप लोग उनका भी ख्याल रखिए, because they are going to be disadvantaged. The vulnerability that Dr. Gangadharan was mentioning, they are more vulnerable. समाज में उनको कम importance दिया जाता है और उनके पास अगर pension भी नहीं रहता है तो they will be treated not well like any other person. So request all of you to please take care of all the elderly women in your neighborhood. महेश्वरी जी ने आप लोगों के संस्था के बारे में बताया है, जैसे मिजोरम का उन्होंने बताया कि कैसे हर गांव में उनका प्रेजेंस है, सबका ख्याल रखते हैं, या कोविड के टाइम whatever support all of you have provided to each other. I think it is a fantastic thing. I'll just take one thing which I wanted to share with all of you कि हम youngsters क्या expect करते हैं senior citizen से. आपका आशीर्वाद as a first thing, and आप हमको inspire करते रहिए with your learning. जैसे सभी ने बताया कि nation building में आपका बहुत बड़ा योगदान है. तो how are you inspiring us, continuing to learn? आप लोग सब एक गोल लेके आए थे, and I'm sure as a youngster versus now आपका गोल अभी भी है. जैसे मिश्रा जी अपना एक गोल रखे हैं, सबका अपना एक गोल रहेगा तो वो सेंस ऑफ पर्पस रहेगा कि आज हम उठ के क्या करेंगे, आज हमको ये करना है. And we would like to continue to be inspired by all of you. I will end this by saying that Tata Trust is looking at senior citizens as an important part of the society. देश का डेवलपमेंट नहीं, हम डेवलपमेंट गोल्स नहीं अचीव कर पाएंगे अगर हम सीनियर सिटीजन्स को इंक्लूड नहीं करेंगे डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क में. सो इट इज वी कंसिडर ऑल ऑफ यू एज इम्पोर्टेंट. यू कैन हेल्प योरसेल्फ, you can help others, and we will be inspired by all of you to see what best we can do. We are in touch with Bharat Pensioner Samaj. ये मेरा third meeting है महेश्वरी जी के साथ in the last 1.5 months. Every time वो inspire करते हैं कि कैसे वो अपने काम के थ्रू आप लोगों को या सारे pensioners को help कर रहे हैं. So we are continuing to talk with him. We will continue to work with BPS. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you very much. Now I am inviting Shri Subramaniam sir. He is coming all the way from Chennai. Please, sir. Respected President, Comrade Maheshwari ji, Dr. Gangadharan, Madam Saraswati, and Mr. Amiya Raman,
and my friends down below. I first of all want to congratulate the Mizoram Pensioners Association and the National Pensioner Association of Nagpur for getting an award from Bharat Pension Samaj as a best institution of the. I was told, Mageshwari, that Mizoram Pensioner Association doing an excellent job, and we want to emulate you, sir. Please continue. Congratulations to you all. And secondly, I want to convey the greetings of the Secretary Pension, Mr. Srinivas, whom I met day before yesterday. He recollect the lunch he had with you, and he wants to convey the greetings from him for the Bharat Pension Samaj 69th conference, and wish you all a success. And my appeal, because today I was fortunate that Mr. Mishra ji also present here. Now, after the meeting with the Secretary Pension, we feel we have no other option left other than say ask for the 8th Central Pay Commission appointment. Before going to the detail, I recall how Comrade Umramal Prohit ji in 2014 secured us the 7th Pay Commission, and now the entire responsibility of getting the 8th Central Pay Commission is rest on the shoulders of Comrade Mishra ji. So, on behalf of the entire pensioners community, we appeal to Mishra ji to work for that and secure us the 8th Central Pay Commission at the earliest, that is before the 2024 elections. I was trying to meet Mr. Mishra ji. Day before yesterday when we discussed as a follow-up measure of Mr. Srinivas' visit to Bangalore, I raised the issue of BSNL pensioners' pension revision. He told me that the Supreme Court petition did not identify the pension ministry as a party. Therefore, he did not get the copy of the judgment. So he wants a copy of the judgment to be forwarded from the pension ministry to him so that he can pursue the matter with the government. So I request Comrade Misri ji, before he leave Delhi, see that the Ministry of Communication or the BSNL authorities forward a copy of the judgment officially to the Ministry of Pension so that they may also jointly pursue the matter of revision of pension for the BSNL pensioners. I want to highlight the sufferings recently encountered by the family pensioners of railways. The railway family pensioners are denied the fixed medical allowance on a manual provision. We pointed out to the railway board that the manual provisions cannot overrule the provisions of the CCS pension rules. When the CCS pension rules guarantee the fixed medical allowance for the widowed daughters, unmarried daughters, and other family secondary pensioners, the railway's decision
not to continue with the fixed medical allowance for the railway pensioners is discriminatory and is violative of the CCS pension rule, and this matter requires urgent consultation or consideration by the Bharat Pensioner Samaj as well as Comrade Mishra ji, because this is a suffering newly inflicted on the pensioners, and it will be very great injustice for the government to deny them the fixed medical allowance. Another important question, Mishra ji was referring to the digitalization process. Because of the digitalization, some of the postal authorities are taking a position that even those who are getting pension through the post offices, they cannot get their life certificate in a normal way by giving an application or giving a form filled up and getting the DLC or life certificate. Now, some of the postal circles are insisting they can give only DLC, not the ordinary LC. Therefore, everybody should pay 72 rupees. And after paying the 72 rupees only, they can be given a digital life certificate. That stand is being taken by many circles in Tamil Nadu. So we have taken up the matter with the CPMG Tamil Nadu also. So these new digitalization enthusiasm must be curbed so that everybody has got a right to have their own life certificates from the source from which they are receiving pension. So this is one more point we have taken up with the secretary also. So Comrade Maheshwari was saying that we are not getting huge pension amount. But the mistake lies in many of our pensioners that we say before our colleagues or family members that at the time of retirement I was having so much rupee as my pay. Today I am receiving triple or double the amount which I drew as a last pay when I was retiring. So it gives a picture as if that we are very much well off. But I want to illustrate to you, when I joined service in 1969, I was given a pay of 130 rupees plus DA. Then the cost of 1 tola of gold is 100 rupees. I can get 1 tola of gold plus 30 rupees extra. But today, what is the cost of 1 tola of gold and excess? So if you calculate the amount which you get in 1969 or subsequently is the same amount of value, but only paper money is with us. Because we are getting some more paper money, we cannot get an impression that we are getting more amount than we at the time of our service. This casual talk create an impression that we are very much well off. Even today, if a pensioner is not owning an house and if he has to pay his rent and also to survive in this world, it is not difficult with the existing amount of pension which we receive today. Therefore, the feeling of surplus must be got rid of our mind so that we fight with the government to get our legitimate dues. We are today fighting not for a more amount or very luxurious life. We are fighting only for a day-to-day existence. As put by Comrade Mishra ji, they have created anxiety in our mind. Every pensioner, even yesterday I pointed out to the secretary, there was a WhatsApp message circulating in the minds of in the social media that the Minister of Finance has assured
that people will be given pension from the 65 years onwards, additional pension from 65 years onwards. I show him the circular copy. I asked them whether is there any decision by the government to give the additional pension from 65 years immediately, as was seen in the message. It is a fake message, but neither the government nor the secretary pension is in a position to assure that we will be getting it. I asked him to answer one question, that the pensioners retired on 36. The government of India solemn says that the matter is under consideration. Whether we will be getting that additional increment for the retirement during 36 immediately. He says it cannot be decided by the government now, only the pay commission should decide it. So ultimately, we must get the pay commission appointed, and though the government says that it is under consideration, it is not any likelihood of getting our pension revision, that is additional pension or the commutation value, etc., because the government is not serious about the government employees and the government pensioner. I want to remind you, we are nearly 15% of the population. Senior citizens 60 plus pensioners are 15% of the population. Today, the victory margin between a ruling party and an opposition party is not even 5 to 10%. Therefore, if we, senior citizens, get together, concentrate on our particular problem, and vote en bloc, we can change the government. So, next government will be the government voted by the pensioners and the employees. Therefore, government has no other option but to appoint 8th Central Pay Commission, that too before 2024, so that the Pay Commission may take 2 or 3 years for their consideration, and we may get the next revision due from 2026. Therefore, our concerted effort must be to get the Pay Commission secured from the government, and I hope the leaders of Bharat Pension Samaj, because it represents the entire country. So the Bharat Pension Samaj and the JCM staff side will put their heads together and see that we get what we wanted today without any difficulty. I hope within our endeavor, the All India Federation of Pensioners Association will also be with you as a memorandum of understanding partner, and let us together work for the 8th Central Pay Commission with the help of the serving employees. And now a strange thing is that our former finance minister, Mr. Chidambaram, who was responsible for the introduction of the new pension scheme, now bats for the old pension scheme restoration. In many states, the opposition parties are given a commitment that they will restore the old pension scheme. Therefore, it is easier for us now to get back the old pension scheme, and I congratulate Comrade Mishra ji on his leadership. The entire country is rising as one man, so that we will fight against the new pension scheme and get the old pension scheme. Therefore, on this struggle also, as a senior citizen, we should not be a patient spectator, and we will assure him, and we will also take a resolve that we will get the old pension scheme back, and we will fight without any let-up and with most unity. Because only thing is required is, as highlighted by Comrade Mishra, there is proliferation of pensioners organization as well serving employees organization. When there is an organization of 65 years old in Bharat Pension Samaj, when there is an organization of 45 years old in All India Federation of Pension Association, what is necessary for forming a new organization and to divide the existing pensioners' unity? Therefore, let us retrospect ourselves. Multiplication of the unions are better, or
worst, whether it is in the interest of the pensioners and serving employees or otherwise, and let us get our acts together so that we will present the united front before the Government of India and secure our rights. Please respond with me. Pensioners Unity Zindabad. Pensioners Unity Zindabad. Long live Bharat Pensioner Samaj. Long live Bharat Pensioner Samaj Zindabad. Thank you, comrade. बढ़िया लगा सर, जिंदाबाद से हमारे पुराने रेलवे के दिन याद आ गए सर हमको। अभी हमारे मुख्य वक्ताओं के जो उद्बोधन थे वो पूरे हो चुके हैं। इसके बाद का एक मुख्य कार्यक्रम जो है, जिसमें हमारी जो एसोसिएशनें हैं, मैं ये बता दूं सर कि हमारी 225 एसोसिएशनें हैं भारत पेंशन समाज से जो एफिलिएटेड है, उसमें से 150 एसोसिएशन के करीब 145 एसोसिएशनें आज पार्टिसिपेट कर रही है सर ऑल इंडिया से। और सर उसमें 20 स्टेट के लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, ऑल इंडिया से 20 स्टेट के लोग, 20 स्टेट्स। और इसमें सर ये परफॉर्मेंस का जो एक पैरामीटर्स है अलग अलग, उसमें हमारी जो कमेटी है उन्होंने 2 ट्रॉफीज है सर हमारे यहाँ, एक वट्ट मेमोरियल ट्रॉफी और एक दया माहेश्वरी ट्रॉफी। तो इसके लिए सर मिजोरम सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी है, मैं उन्हें यहाँ बुलाऊंगा और डॉक्टर गंगाधरन साहब से कहूँगा कि वो उन्हें ट्रॉफी एवं 5,000 रुपीज़ का जो अवार्ड और ये सर्टिफिकेट, ये सर, ये सर मिजोरम सेंट्रल पेंशन एसोसिएशन जो है सर, इन्होंने सर हर डिस्ट्रिक्ट में इनकी ब्रांचेस है सर। जी सर, इनके सर हर डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेस है मिजोरम में, और ये अलग अलग बीमारियों के लिए लोगों को, जी ये हमारी जो मिजोरम सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन है, उनकी हर मिजोरम में हर गांव में एक ब्रांच है। और ये जो भी पेंशनर्स कुछ बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे टीबी है, कैंसर इत्यादि है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट देते हैं। इस साल इन्होंने अभी पिछले महीने 1,98,000 की सपोर्ट पेंशनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की है। और अपने लिए इन्होंने 3 मंजिल का ऑफिस 1.5 करोड़ रुपया खर्चा करके बनाया है। उसकी दो मंजिलें उसकी इन्होंने किराए पे उठा दी 1,40,000 रुपये महीने में। सो हमेशा के लिए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर ली। ये एक कंबाइंड एसोसिएशन है, इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के भी लोग पेंशनर्स हैं, स्टेट सर्विसेज के भी हैं और सेंट्रल सर्विसेज के भी लोग हैं। तो दे हैव सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। वी आर टुडे प्रेजेंटिंग देम ए ट्रॉफी, SP Vatta Memorial Trophy with 5,000 rupees cash reward. अगले नेशनल रेलवे के लिए
अगला एक मिनट सर, ये ओके। दूसरी ट्रॉफी दया महेश्वरी मेमोरियल ट्रॉफी विद 5000 कैश, वो इस साल की ट्रॉफी जाती है नेशनल रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन नागपुर को। इन्होंने 100 से ऊपर पेंशनर्स के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस कराया है गवर्नमेंट से, बेटियों की भी पेंशन सेंक्शन कराई है, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। लांजेवर जी आज हमारे सेक्रेटरी हैं रेलवे पेंशनर्स के। थैंक यू सर। वो लिफाफे का पैसे लिफाफे हम बाद में दे रहे हैं। सर लिफाफे हम दे रहे लिफाफे हम दे रहे बाद में। Give a picture, give a smile. Mrs. Maheshwari. ये तो आपकी ट्रॉफी है मैडम के लिए, उनकी है ऐसे ऐसे सी वन स्माइल। थैंक यू। बताइए हो ये हमारे स्ट्रॉन्ग ऐसे चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका, आपने इतना समय दिया हमें। हाँ लिफाफे कहाँ हैं भाई? जो काम निबट जाए वो अच्छा। सर अरे भाई वो जा रहे हैं ना। इसके बाद हमारे जो प्लेटिनम ब्रदरहुड के जो हमारे जो ऑनर हमको करना है, अच्छा हाँ चौहान साहब खड़े वो आराम से सर्टिफिकेट शुरू पहले पहले कैश लाओ। अरे पहले कैश लाओ जी। जो नहीं एक आइटम खत्म हो वो दे नहीं रहे हैं। 2 साल नहीं हम बाद में दे देंगे कैश। क्यों इधर उधर हो जाएंगे यार, उसको बुला के दिए हैं मैंने। हमारे प्लेटिनम ब्रदरहुड के लिए हमारे 80+ के जो हमारे मेंबर्स हैं उनका हम सत्कार करेंगे। उनमें रूप कुमार चौहान साहब है, फिर CS रायलू साहब है, वो भी ऊपर आ जाए, वो लेके गया था। हंसराज माही साहब है, फिर ये बलदेव राज हैं। तो हम एक एक करके इनको ये करेंगे जी। नाम बुला रहा हूँ सर। अरे चौहान साहब उनके पास नाम लेके बैठे हैं, तो पता नहीं कहाँ खिसक जाता है यार। हेलो मुझे क्या मालूम यार, मैंने तो 5,000 दिए है ना सर, है लिफाफे है लेकिन लाया नहीं उन्होंने इधर। चलने दो। क्या है आप, क्या हो गया, किसके पास थे ये सिविल पेंशन सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन मिजोरम, आपका ये कैश अवार्ड है। मिजोरम सब यार कमाल है। ये सबसे ये उनके साथ ही अवार्ड है ना, एक्चुअली ये कैश अवार्ड है। कैश अवार्ड। नेशनल रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन हाँ। कैश अवार्ड 5,000 रुपीज। 2-3-4 जनवरी को वहाँ रहेंगे। बिल्कुल सर, नागपुर में। बिल्कुल सर। आप अभी आप सेफ्टी सरकार में आए तो तकलीफ। हाँ वो लिखा अब वो बुलाइए।
लिस्ट बताइए। हाँ 80+ वाले लेके आओ, माला और ये लेके आओ। हाँ इधर मेरे पास है। चौहान साहब, मैं दे रहा हूँ सर। चौहान साहब, नहीं वो तो सभी को खड़ा कर लो ना। सबको बुलाइए। हाँ चौहान साहब। हर साल जो लोग 80 ईयर्स क्रॉस करते हैं, हमारे नंबर रहते हुए उनको हमारा जी जी ये शॉल्स, वो लिस्ट कहाँ है रे? वो देना था, वो नाम कहाँ चले गए साले अभी के अभी। हाँ माही साहब, रायलू जी जी, चलो देते जाओ। ये सर्टिफिकेट कहाँ है? सर्टिफिकेट कहाँ है? सर्टिफिकेट अच्छा इनके पास है, महेश्वरी साहब के पास है। रायलू साहब आइए, आगे आगे आइए सर। चलिए ना वो सब हाथ जी। बलदेव राज शर्मा जी जी आइए आइए। वहाँ से आना चाहिए। BM भाव साहब आइए आइए। अंकल अंकल श्री सत्यानंद सिंह, सत्यानंद सिंह, श्री दिनेश शरण। आंजवर जी जी सर, आपकी आवाज थोड़ा क्या बोला। ठीक है सर। श्री दिनेश शरण साहब, दिनेश शरण, द्वारका प्रसाद जी सर। GM हलवादिया, कालूराम जिंगर जी, करमचंद गोयल साहब, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। NK रामकृष्णा, लेफ्टिनेंट कर्नल रामकुमार गुप्ता साहब, रामकुमार गुप्ता जी जी, LC राजपाल साहब, MC कपूर साहब, MC कपूर साहब, और ये शांति स्वरूप साहब, शांति स्वरूप जी, शांति स्वरूप जी है ना? यस नहीं इसमें नहीं मिला मेरे को, जितने नाम मिले सर्टिफिकेट इतने ही है। शांति स्वरूप जी सर, ये सबको शॉल दे देते। हाँ हो गया सर, पूरे नाम हो गए। चलो मार लो शॉल दे देते।
सर, ये सब हमारे आदरणीय वेटरन्स, सभी 80+ के पेंशनर्स हैं। इनका सत्कार करते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि इस 80+ के उम्र में भी ये लोग इतने फिट एंड फाइन हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ऐसा ही उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे और हम सबको वो मार्गदर्शन करते रहें। ऐसे हमारे 80+ के साथियों को देख के हम जैसे जो कम उम्र के लोग हैं उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है और हमें भी एक आशा मन में जागृत होती है कि शायद हम भी इस मकाम तक पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू साहब, थैंक यू। मुजफ्फरनगर के माधुराम गर्ग जी आए हैं, वे भी 80+ हैं जी। उनको भी उनके बारे में अगर ये देते प्रशासन उनके बारे में। यहाँ सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, पता नहीं। माधुराम गर्ग जी हैं, उनका नाम तो बोल दो, ब्लेस तो कर दो। माधुराम गर्ग 80+ में कुछ नाम छूट गए हमसे, हमारे उसके लिए खेद है। मुजफ्फरनगर से हमारे साथी माधुराम जी यहाँ आए हैं, उनके सर्टिफिकेट ऑफिस में रखे हैं, वो उनको हम अभी दे देंगे। यहाँ हम ला नहीं पाए, हमें खेद है, लेकिन उनका भी हम सत्कार करना चाहेंगे। वो कहीं हो तो यहाँ आ जाए प्लीज। माधुराम गर्ग बुलाता हूँ। हाँ, माधुराम जी भी यहाँ आ जाए प्लीज। हरदीप सिंह लुधियाना से हैं। हरदीप सिंह जी लुधियाना से हैं, वो भी यहाँ आ जाए। कुछ कम्युनिकेशन गैप हुई होगी, उनके सर्टिफिकेट ऑफिस में रह गए हैं, लेकिन वो उनका भी यहाँ स्वागत है, उनका भी हम आशीर्वाद चाहेंगे। यहाँ पर हम चाहेंगे कि वो भी यहाँ आ जाए। ले रहा हूँ 5 मिनट सर, ये मैं कंप्लीट कर लूँ। जी जी, एस के शर्मा साहब भी यहाँ हैं। अरे वो आना चाहिए ना। सोलोमन साहब भी ऊपर आ जाएं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। 80+ के जो हमारे साथी हैं उनका हमें ऐसा ही मार्गदर्शन मिलता रहे। कुछ नाम जो छूट गए हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। हाँ जी, श्री माधुराम जी यहाँ आ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। यार तो नाम तो देना था ना, नाम नहीं दिया। अमृतलाल जी चक्रवर्ती भी यहाँ पर है, वो भी कृपया आ जाए, हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। हेलो अंकल, इसका नाम नहीं बोले। इसका सत्यनारायण सिंह नहीं है ना, ये नहीं आए ना। जो भी आए हैं, मैंने सत्यानंद सिंह होंगे, एन के रामकृष्णा, MC कपूर और LC राजपाल साहब और लेफ्टिनेंट कर्नल राम कुमार गुप्ता साहब। अभी जिनके नाम छूट गए थे हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। एक आइए सर, थोड़ा ये हो जाती है खत्म। हाँ, डॉक्टर अमृतलाल चक्रवर्ती भी यहाँ पर है, उनका भी 81 हो गया है। तो जो पहला हमारा बैच हो चुका है, हम सेकंड बैच में। YB खरे साहब भी यहाँ हैं। ये सब नहीं, वो अच्छी बात है, बस हमारा 80+ ही है, तो इन सब का स्वागत क्यों नहीं देंगे। 450 पेंशनर्स हैं हमारे। हाँ जी, कोई बात नहीं, इनका ये काम करना है। जी जी, बताओ इनको। सर 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 LC राजपाल जी, LC राजपाल जी नहीं है।
इनका हो जाएगा, उसके बाद में ये कर लेते हैं ना। ये जो अपना पहले जो गेस्ट है, जो गेस्ट उनको पास ऑन करते हैं ना। चलो आप सबको माला बन संत सिंह क्लियर हो गया था ना कि वो 80 प्लस जो 90-40 के 98 कंप्लीट कर रहा हूँ। लिए नहीं है। क्या ना? हाँ, सोलोमन जी आए हैं। अमीर रमन साहब कहाँ हैं? अमीर रमन जी, सोलोमन साहब का सर्टिफिकेट नहीं है अभी उनके, सिर्फ माला पहनाना है। सभी को माला पहना के स्वागत करिए, जितने भी है सबको पहना दीजिए। हाँ, उनको सर्टिफिकेट हम बाद में दे देंगे। आप बोलिए थोड़ा सा, आप बोलिए, मैं कुछ कर रहा हूँ ना। जिनका सत्कार हो चुका है वो कृपया स्टेज के नीचे आ जाएं ताकि दूसरे लोगों को चांस मिले, प्लीज। जिनका सत्कार हो चुका है वे कृपया नीचे आ जाएं। हाँ, पता नहीं। ओके ओके, लेट्स करना होगा। कोई है मुझे पहचानता नहीं। सर, जिनका स्वागत हो चुका है कृपया वो नीचे आ जाएं, प्लीज। हाँ, आ जाइए, आ जाइए। स्वागत हो रहा है ना? ठीक है ना, प्रश्न तो नहीं है। आ जाइए, अरे आ जाइए ना प्लीज, आ जाइए ना, आप आ जाइए ना, आप आ जाइए ना। जिनके नाम छूट गए हो वो कृपया स्टेज पर आ जाएं। 80 प्लस के उनके सर्टिफिकेट हम बाद में भेज देंगे। प्लीज प्लीज बियर विद अस। हम सब सरकारी कर्मचारी हैं और काम चोरी में हमारे आदर्श शायद आप ही लोग हो सकते हैं, तो हमारे हाथ से काम चोरी हो सकती है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। हम आपके आदर्शों पे चल रहे हैं, कुछ गलती हो जाए तो उसको हमको एडजस्ट करना है। किसी को नाराज नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सब सरकारी है। हाँ, सरकारी है इसलिए हम सबको समझ के लेना चाहिए थोड़ा सा। सभी से 100% सही होगा इसकी अपेक्षा करना ठीक नहीं रहेगा, गलती हो सकती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके नाम छूटे हैं उनके नाम हम रिकॉर्ड में ले लेंगे, उनके सर्टिफिकेट आ जाएंगे, 100% आएंगे, उसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। लेकिन कोई नाराज ना हो। तो हमारे साथ जो लोग आए हैं वो अपने व्यूज उसमें डेलीगेट सेशन में शेयर करेंगे, तो उनके व्यूज भी आप सुनिए। उससे आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम जो है मिल गया। गुड, ओके, थैंक यू। राइट, जब भी हमने जो अनाउंस किया था पटनायक साहब का बैग मिल गया है, तो जिनकी सज्जन ने उनको दिलाया है उनके लिए धन्यवाद, साधुवाद। और एक किसी हमारे डेलीगेट की वॉच यहाँ लाके किसी ने दिया है, तो जिन किसी की होगी वो लेके जाए। हम डेलीगेट सेशन शुरू करने जा रहे हैं। 2:30 बजे हमको शुरू करना था और हमें 5:15 बजे ख़त्म करना है, क्योंकि बाद में आदरणीय माहेश्वरी साहब भी इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं इस डेलीगेशन सेशन को शुरू करने के लिए हमारे जॉइंट जनरल सेक्रेटरी अमीर रमन जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वो 2 शब्द कहेंगे, और उसके पश्चात जिन डेलीगेट्स ने उनकी स्लिप दी है वो स्लिप के अनुसार उन्हें हम कॉल करेंगे। आदरणीय सेक्रेटरी जनरल साहब ने एक रूल बताया है, वो सब लोग नोट कर लें, क्योंकि सभी को बोलने का चांस मिलना है और करीब 40 लोगों की चिट्ठियां आ चुकी है।
करीब 40 चिट्ठियां मेरे हाथ में हैं अभी। तो सभी को समय का ध्यान रखना है और अपने समय में हमको अपना प्रोग्राम करना है। तो जो भी डेलीगेट बोलना चाहेंगे वो 4 मिनट में अपना वक्तव्य रखेंगे और साथ में लिखा हुआ अपने नोट्स भी वो दे देंगे तो कंपाइल करने के लिए इजी रहेगा। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट वहीं बैठ सकते हैं ना? हाँ, और सभी मैनेजिंग कमेटी मेंबर भारत पेंशन समाज के वे सभी डायस पर आमंत्रित है। मैनेजिंग कमेटी मेंबर डायस पर आमंत्रित है और अमिया रमन जी यहाँ सादर आमंत्रित है। कितने लोग हैं बोलने वाले? 35-40 है सर। 35 के करीब है। निपटाओ। सभी बीपीएस के मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स से निवेदन है कि वो प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं। मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स सीखें, आज हमारा सुनने का दिन है। हमारे डेलीगेट्स बोलेंगे, उनको कोई शिकायत हमारे खिलाफ है तो वो भी बताएंगे और अगर कहीं कोई उनकी सजेशन है तो वो भी है। अभी हमारे जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं, कोई शिकायत है तो वो जवाब देंगे जिसका कंसर्न है और नोट उनकी सजेशंस को नोट करेंगे। आइए प्लीज़ कम। बोलने वालों में कोई मैनेजिंग कमेटी मेंबर तो नहीं है? हाँ? हटाओ दो। मैनेजिंग कमेटी मेंबर नहीं बोलेगा, ठीक है, वो सुनेगा। मैं चिट्ठी निकाल दूंगा। हाँ, वो उनके मिस्टर दहिया उनकी एसोसिएशन का कोई, ठीक है। अब सबसे पहले आप बुलाएंगे मुजरम को और उसके बाद बुलाएंगे वो लक्षद्वीप वाला, ठीक है, मैं नोट कर अगर सर 1 मिनट हाँ फ्री हो जाएगा सर। हाँ अमीर रमन जी प्लीज। और फर्स्ट वक्ता हमारे रहेंगे JS दहिया, ऑल इंडिया BSNL पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन। मिस्टर दहिया ऊपर आ जाएं। गुड आफ्टरनून टू ऑल। अति सम्माननीय अतिथि, विशिष्ट अतिथि, गेस्ट ऑफ ऑनर, समस्त पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, आज के इस एजीएम में आपको विभिन्न मुद्दों पर काफ़ी जानकारी मिली है। आप सबने महसूस किया होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत पेंशनर समाज की मजबूती अति महत्वपूर्ण है तथा सरकार की पेंशनर्स के प्रति उदासीनता को समाप्त करने का एकमात्र यही विकल्प है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जस्टिस शंकर सरन IAS, NP श्रीवास्तवा, कुलपति अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, M रत्ना स्वामी द्वारा 1955 में स्थापित इस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आदरणीय श्री माहेश्वरी जी सेक्रेटरी जनरल के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत काफ़ी ख्याति मिली है, इसके संयुक्त महासचिव के लिए मुझे चुना है और समर्थन दिया है। मुझ जैसे अनुभवहीन व्यक्ति के लिए संयुक्त महासचिव का पद बड़ा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आदरणीय श्री माहेश्वरी जी के मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और उसे मैं क्रियान्वित करा सकूंगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ उपस्थित सभी लीडर्स डिजिटल मोड, RTI, सीपेनग्राम, ईमेल आदि से ग्रीवांसेस का निपटारा कराएं और समय की मांग को देखते हुए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ब्लॉग आदि पर सक्रिय हों। साथ ही अपने संगठन के हर सदस्य को इसके लिए प्रेरित करें। अभी भारत पेंशनर समाज के पहल से फेसबुक पर तमाम स्लोगन्स की पहुंच 25 से 50 हज़ार लोगों तक हुई है। पेंशनर्स अवेयरनेस के तमाम वीडियोस तथा यूट्यूब को पूरा देश देख रहा है। यह सब
आपकी सक्रियता से ही संभव हुआ है। सिर्फ संकल्प लेने की ज़रूरत है। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है कि आप सब लोग अगर भारत पेंशनर समाज के अभियान से कदम मिलाकर चलेंगे तो पूरे विश्व में इस संगठन का नाम बहुत ही ऊंचाई पर होगा, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इसी उम्मीद के साथ जय भारत पेंशनर समाज। धन्यवाद। Respected President, senior leaders sitting on the dais, and delegates, observers coming from all parts of India. I am J.S. Dahiya, delegate from All India BSNL Pensions Welfare Association, the biggest in telecom. Our association is affiliated to Bharat Pension Samaj for a very long time. We thank BPS leadership, particularly Comrade Maheshwari ji, for accommodating Comrade Anupam Kaul, our Deputy GS, as Vice President of BPS from NCR. Our main issue, affecting nearly 4 lakh BSNL, MTNL pensioners, is pension revision from 112017. With 32% fitment at par with central government BPS, BPS ported our demand before 7th CPC. It tendered oral evidence and submitted supplementary memorandum also on our issue. I take this opportunity to thank BPS, particularly Comrade Maheshwari. Since this issue could not be settled through discussion, despite several meetings with DOT officers and Honorable MOC, we filed a case before Honorable Principal Bench CAT Delhi. It pronounced a judgment on 20 September 2023, allowing our OA. The judgment directed DOT to implement the judgment within 10 weeks from the date of receipt. It directed the respondent to revise the pension at par with central government pensioners. The judgment was unambiguous. I request this AGB to pass a resolution demanding DOT to implement the Principal Bench CAT judgment without preferring an appeal. The government may announce formation of 8 CPC at any time. I request this BPS to discuss with Pension Department beforehand about including pension revision of BSNL MTNL pensioners who were absorbed from DOT and who opted for government pension on combined service in terms of reference of 8 CPC. I request the annual general body to take such a decision. This will provide a permanent solution. So in the end, आपने नहीं सुना होगा किसी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स 7 साल तक अपनी पेंशन रिवीजन का इंतजार कर रहे हों, और ये सफरर्स हैं जो डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन से BSNL में आए और रिटायर हो गए, सारे बेनिफिट बेंच पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के ले रहे हैं, लेकिन आज तक 7 साल हो गए हैं, उनकी पेंशन रिवाइज नहीं हुई है। ये हमारा दुख और दर्द है। धन्यवाद। Thank you, Mr. Chairman, sir, and VIPs in the unrespectable delegates. I am taking a lot of wishes for the success of this August meeting of BPS from Mizoram Pensioner. My name is Mr. Rumoya, Secretary Mizo Civil Pensioner Association. I am a first-timer in this meeting. I think I may not have chance to come again in this August meeting next year. Composition of our member. Our association is a state association, mixed association having members from different cadres like IAS, IPS, IRS, IFS,
INAS, and other central services, in addition to Army like paramilitary force, GRIF, and other central services like Vice Chancellor of University are included. Office building. Our pensioner is running very well in construction of office building at a free gifted land, centrally located, uncompleted, unoccupied on 1st February 2003 with rupees 235,62,70 were spent and no loan has been taken from any quarter. The ground floor is occupied as office and the rest is rented out, from where we receive 1,10,000 per month. First formulation. This is the recommendation of 7 CPCs. We had been trying very hard for implementation of and started implementing it now. Some of them have completed the process and the completed wala ne area ne liya tha. Year to vary from thousands to lakhs. Endowment fund. Our association has been distributing financial help to the essentially critically ill pensioner are recommended by the branch concerned. The last distribution was held on 27/6/23, wherein as many as one pensioner were financially helped at the rate of 3,000 each. The total amount spent comes to 3,42,000. At present, we have 110 lakhs in terms of deposit and 7,47,40 in saving account, totaling 117,47,040. Dissemination of pension problem. During the fair weather, officials from headquarters visited branches within a city as well as rural areas where problem on pension matter arises. Pensioners of the visited branch have found very fruitful and success. Every day, at least 3 pensioners have come to our office for consultation. We have been publishing journal Civil Pensioner every month with a circulation of 9,920. Lottery. The state land lottery judge is sponsored by the pensioner office only. No other agency can recommend for the judge. From the judge, we expected 10% from their remuneration. Normally, we are getting 13,000 approximately monthly from this source. Central health scheme. One thing I would like to request the VIP that in Mizoram there is no central health scheme hospital. At least I request the honorable members and General Secretary that there should be only even one empanel hospital for the central health scheme. This is very important for us. Lastly, I'll not take much time. I would like to emphasize to you is the active role played by Mr. S.C. Maheshwari, General Secretary. He is found very active in all matters concerning pensioner. Under his guidance, we have achieved many success. His journey exemplifies not only exceptional achievement within pensioner subject, but only his multifaceted contribution for the pensioner society and culture are worth mentioning. His contributions are instrumental in serving the pensioner welfare and security. I knew him since 2016. I had continuously seeking advice in all matters of pension and received immediately the reply, good replies. Long live Bharat pensioner, Jai Hind. Can I go to my seat? Yes, sir. Sir, hands up.
Respected BPS President Mr. Chauhan ji, Secretary General Mr. Mageshwar ji, and other distinguished guests in the dais. It is a great privilege for me and honor to address the gathering here, the mostly septuagenarians and octogenarians, means above 70 and 80 are the pensioners now. In our association, above 70 and 80 are all members. So, we are from Lakshadweep. Let me introduce myself. We are from Lakshadweep retirees, scattered over Kerala, from Trivandrum to Kannur. See, our members, when we went to Lakshadweep, initial appointment, we were offered a special pay equal to pay, basic pay. That was withdrawn when fourth pay commission came. From that day onwards, we fought with the Lakshadweep administration, legally fought for the so many litigations from 1991 to 2020. We have received a final verdict from, already we have received a verdict from the Supreme Court also, but it should be treated as part of basic pay for the entire period of duty in their islands. So, but the Lakshadweep administration withdraw this one and we fought for our right. Now, we have reached a final stage. We have 229 members, out of which 201 persons were given the pension according to special pay, treated as basic pay. Now only remaining 20 members, and even then the Lakshadweep administration did not implement the verdict properly, and that is why we are fighting with now. So I seek the help of our Secretary General. We went there, the office, and requested their support for everything. So he has kindly agreed to do so. In the meantime, actually we had another problem that has been solved now. That the Secretary General in the report, it is said so. See, in 2017, the Government of India declared the UT employees are central government employees. They should not be given the CGHS. So we went with that. We immediately stayed the order and got a verdict in 2018. But the government did not implement the verdict common to all. That is why only me, the first person, and another person was given that benefit. Others, association members, not given. That thing has been solved now with the help of our General Secretary. So we fought with that, the ministry. There we sent a request that we are coming for BPS meeting. So you please help us to see the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare. Immediately, we have sent the mail on 7th. And 13th evening, they issued an order that UT employees are central government employees and they should be given the CGH, and our order has been extended to all. We are very grateful to our General Secretary and others, Mr. President. So we went there. Actually, I am astonished. During this busy period, they invited us and helped us in such a way and sent off from there. So now only one problem is now remaining in our case. Only this special pay ordered, High Court order finalized, Kerala High Court order. That should be implemented properly to all. For only this issue, only this issue should be dealt with and given
possible help, whatever possible help BPS can give. We have joined BPS on 10/3/2023. Joined very recently. We are a new face before BPS. Even then, we have made a remarkable achievement with this UT employees order, CGHS order, that is connected with BPS. That is connected with BPS. That is God's grace. That is only. I am 81 of age, 81. We are at the fag end of our life. Even then we are fighting. Because we want our members get justice. That's all. In my opinion, as Gopal Mishra Sahib said, in my opinion, we have a suggestion to our Maheshwari ji that an apex confederation with all associations, should fight together for common causes. That is my opinion of our association. With these few words, I conclude my speech. Thank you, sir. Chaudhary. Thank you. हाँ सर, हाँ, सभी लोगों से निवेदन है कि वो 4 मिनट की मर्यादा का पालन करेंगे। और ये भैया माइक वाला कौन है भाई? माइक वाले जरा, ये दोनों माइक जरा चालू कर दे भैया, ये बंद है, जरा आ जाए इधर। हेलो, ऑन है सर, वहाँ से ऑन करना पड़ेगा आपको। धन्यवाद महोदय। परम आदरणीय महेश्वरी जी और आज की इस अध्यक्षता कर रहे श्री चौहान जी, अन्य शीर्ष पदाधिकारी इस महाकुंभ में पधारे भारत के विभिन्न विभागों से, मैं सभी इंतजामिया कमेटी के सदस्यगण और पत्रकारगण, सदन में बैठे सभी बहनों और भाइयों, मैं सुभाष चौधरी पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं आप सबसे मुखातिब हूं। पहले 4 पंक्तियां इस समारोह के और इस जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में आपको मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूं कि ठहरी हुई नदियों में भंवर देख रहा हूं, ठहरी हुई नदियों में भंवर देख रहा हूं और गुजरे हुए तूफान का कहर देख रहा हूं। ठहरी हुई नदियों में भंवर देख रहा हूं, गुजरे हुए तूफान का कहर देख रहा हूं। तुम चाय की प्याली में उठाते रहे तूफान और मैं बर्फ में जलता हुआ घर देख रहा हूं। माननीय सभाध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि भारत पेंशन समाज के मार्गदर्शन में के कुशल निर्देशन में पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन अपनी तमाम शाखाओं और में शिविर लगाकर फेस रिकग्निशन तकनीक से पेंशनर तथा फैमिली पेंशनर्स के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को बनाना शुरू कर दिया है और बनाया भी जा रहा है और बन भी रहा है। साथ ही साथ महोदय, मैं ये भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हम सब बीमार अशक्त के मामलों में भी उनके घर जा करके लाइफ सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा है और बन भी रहा है, जिनकी पेंशन समाज में बहुत और तथा नागरिकों में भी इसकी काफ़ी प्रशंसा हो रही है और इसकी काफ़ी वाहवाही मिल रही है। गौरतलब हो यहाँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस कार्य में अभी पीछे हैं, ये आगे आकर के पेंशन समाज की या पेंशनर्स की भलाई के लिए अपना सहयोग करें। भारत पेंशन समाज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर रेजोल्यूशन लिए गए हैं जो काबिले तारीफ ही नहीं, काबिले यादगार भी है। Revised definition of family to include widows, daughter-in-laws. मैं टाइम अभी मेरा 2 मिनट बाकी है। The concept of the one rank one pension as applicable to defense personnel may be extended to all civilian pensioners. On the death of pensioners, family pension of spouse should not be reduced. एक ऐसी समस्या का जिक्र आपके सामने करना चाह रहा हूं जो आने वाले के चिंतन का विषय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल में वित्त मंत्रालय ने महंगाई राहत संबंधी पत्र 27/10/23 को जारी किया, अखबारों में भी आया, बैंकों ने इसका पेंशनर्स के खाते में इसको क्रेडिट भी कर लिया। इन सब के बावजूद
रेलवे बोर्ड ने 11 दिन बाद 7/11/23 को जारी किया, जो अपने आप में सोचनीय है। हम आज चांद पे पहुंच गए हैं, परंतु आज भी उस तकनीक को अपना नहीं पा रहे हैं। महोदय, पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन्स नॉमिनेशन रूल 1983 के डीओपीटी में संशोधित नियम 31/3/22 को जारी किया गया, लेकिन भारत सरकार का सबसे बड़ा मंत्रालय रेलवे बोर्ड ने उसे जारी करने में काफ़ी विलंब कर दिया। इस मामले को लेकर अमीर रमन ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल भारत पेंशन समाज के द्वारा आरटीआई लगाने पर 18 माह यानी कि 2/8/23 को जारी किया। चौधरी जी, सरकार यह डिसिप्लिन चौधरी जी जरा वाइंड अप करें। मैं कंक्लूड एक आधा सेकंड रह गया सर। नहीं, आपको 3 बजे आपकी गाड़ी मुझे है। आशा और विश्वास है कि आप सभी आदरणीय लोग इसका समर्थन करेंगे। अंत में चलते चलते कहता हूं, मैंने देखा है आपको मोहब्बत की नज़र से, जिस नज़र से चाहिए आप देखा कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। टीआर श्याम सुंदर जी, मदुराई। Respected Comrade Maheshwari, Secretary General G, respected Comrade Balasubramaniam, General Secretary, All India Federation of Pensions Association. I am Shyam Sundar, delegate from Madurai, Tamil Nadu, belonging to Indian Southern Region Postal Pensioners Welfare Association. First of all, I welcome all the delegates. Comrades, there is a demand of opening CGSS Wellness Center at Madurai, Tamil Nadu since 3 years. We have fought in several platforms. First of all, we started giving speed post memorandum to the Ministry of Health and Family Welfare. After that, we were pursuing the demand continuously. We gave a memorandum to the Ministry of Health and Family Welfare in the pensioners seminar held at pensioners seminar held at Pondicherry during 2022. After that, we passed a resolution at Chennai Federation Conference in July 2023, but the demand is still pending. We request our Samaj, Bharat Pension Samaj, to kindly pass a resolution in this August body demanding opening of CGS Research Center at Madurai very early. There is very justification there. There are more than 6,000 families of serving and retired pensioners in central government in and around Madurai. Madurai there are 8 districts. In all 8 districts, there are around 6,000 members. So there is every justification to form a CGS Wellness Center at Madurai. We once again request our kind Secretary General Sir to pass a resolution and make a follow-up. Thank you. राजपाल दीक्षित जी हैं, आइए सर। उसके बाद प्रदीप करमरकर। Respected dignitaries on DAS and nationwide delegates, this is happiest occasion for all of us. But as far as the program was proceeding, some problems, some discussions have been brought in your knowledge, especially the old pension scheme should be given to all the new employees appointed after January 2024. तो 2004 से जो अपॉइंटेड किए गए उनको देनी चाहिए, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा लेकुना चल रहा है। जो हम चाहते हैं वो हमको प्राप्त करना है, वो प्राप्त जब होगा जब हम अपने लीडर्स के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए इतना ही सफिशिएंट है, miles to go and miles to go before we sleep. First of all, this is we have to follow. दूसरा क्वेश्चन आया सीजीएस का। सीजीएस की समस्या जहाँ तक मैं समझता हूँ कहीं कम होंगी, कहीं ज़्यादा होंगी, कहीं सीजीएस की सुविधा है ही नहीं। जैसे कि हमारे मुजफ्फरनगर डिवीजन में सीजीएस आज तक नहीं खुला है। सहारनपुर में सीजीएस की डिस्पेंसरी ऐसी है
कि वहाँ अगर कोई सही आदमी पहुँचे वो बीमार होकर निकलेगा। उसके बारे में हमने लिखा भी है। अभी मैं डायस से प्रेजेंट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उस बिल्डिंग को इमीडिएट शिफ्टिंग कराया जाए, कि वहाँ का जो मेडिसिन का काउंटर है इतना होता है, उस पर अगर एक बीमार व्यक्ति खड़ा है दूसरे को वेट करनी पड़ेगी, तो ऐसी डिस्पेंसरी में जाने का क्या फायदा है कि जो हम वहाँ से बीमार होकर लौटे। ये समस्या सभी के साथ है, और जगह भी होगी। तीसरी है, जब हमने कंट्रीब्यूशन, जब बेनिफिशियरी ने कंट्रीब्यूशन, होल कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया, उसके बाद उसके पास बचता है क्या है? वहाँ जाएगा कि दवा नहीं है। जब दवा नहीं है तो कहाँ से दवा खरीदेगा? पैसा तो उसने वहाँ दे दिया, कहते हैं आप मार्केट से दवा ले लीजिए, उसका बिल दे दीजिएगा और हम उसको पास करा देंगे। अगर उसके पास खरीदने को दवा होती, वो सीजीएस का मेंबर ही क्यों बनता? सीजीएस का मेंबर इसलिए बनता है कि हमारे लो कंट्रीब्यूशन से हमको लंबा बेनिफिट हो जाएगा। इसमें मैं सारा आपको दे दिया है, ये बहुत अर्जेंट है। डायस को जरूर करना चाहिए कि सबसे पहले तो अब दवा अवेलेबल हो। आज हम ऊंची ऊंची बात करते हैं, ऊंची बातों को जो चक्कर मारेंगे दे आर फूल, वे मूर्ख है। सबसे पहले हमें वास्तविकता की तरफ को देखना चाहिए कि वास्तविकता में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्या होने की 2017, 45, 60 के आश्वासन दिए जाते हैं। अगर आप उन लोगों के चक्कर में आओगे तो यू विल गेट नथिंग, यू विल ओनली बी सफरर एंड योर चिल्ड्रन विल बी सफरर ऑल्सो। तीसरी बात यह है कि वहाँ लेडी डॉक्टर ही नहीं है। हमने कहा, लिखा, मिनिस्ट्री को भी लिखा, लेकिन हमारे लिखने से व्यक्तिगत से क्या फायदा होता है? जब कोई एक मंच लिखे तब बात बनेगी। आज वहाँ जो लेडी जाती है, मैं बेचारी शर्मा क्या बात नहीं करती, कह जाते हैं कि आजकल तो जमाना है। अरे जमाना तो कितना भी अच्छा हो, कैसा भी हो, लेडी डॉक्टर तो एक चाहेगा ही। जब लेडी डॉक्टर होगा तो जब तो लेडी वहाँ इलाज कराने निकल जाएंगी। आधी लेडी जो है अपने घर में इधर उधर महंगा सस्ता या नहीं इलाज कराती, बीमार हो जाते हैं। तीसरी बात, इमीडिएट बिल्डिंग ऑफ शिफ्टिंग। वो बिल्डिंग शिफ्टिंग के लिए जरूर तुरंत अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि वो डिप्लोरेबल है, बहुत कंडीशन खराब है। वहाँ तो डेंगू हर समय हो सकता है किसी को भी, क्योंकि इतनी बुरी खराब बिल्डिंग है। लेकिन सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। हमने काफ़ी लेटर लिखे, हमें कहा गया, आलोक सक्सेना जी थे डीजी ऑफिस में, कह लगा आप मन से लिखवाओ, मगर मन से भी लिखवा देंगे, चिंता ना करो। तो आज वो समय आ गया है कि हमारा मंच उनको लिखे कि उस बिल्डिंग को तुरंत शिफ्टिंग किया जाए। जबकि वहाँ एक बीएसएनएल की बिल्डिंग तैयार है, हमें देने के लिए रेडी हैं, वे बार बार लिख रहे हैं ले लो ले लो ले लो, लेकिन ये इधर उधर बैकआउट हो जाते हैं और लेते नहीं है। तो इस प्रकार की समस्या हम सब पेंशनर, क्योंकि पेंशन समाज एक रिवॉल्यूशन है, एक सोशल जस्टिस के लिए रिवॉल्यूशन है। जब पेंशन प्रोसीजर अप्लाई किया गया तो एक दान के रूप में नहीं था, एक भीख के रूप में नहीं था, वो एक सोशल जस्टिस का रिवॉल्यूशन था। अगर हम उस सोशल जस्टिस के रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा पेंशन मंच पर जो हाई डिग्निटीज बैठी है और जो इस साइड में डेलीगेट्स बैठे हुए हैं, उन दोनों को एक दूसरे को एकोमोडेट करके आगे बढ़ना होगा, तब ये बात बनेगी। अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमें उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा प्रयास सब बेकार हो जाएंगी। रैली हुई थी मारामिला ग्राउंड में, कितनी ऊंची रैली हुई। इस प्रकार के हमें अनेक आयाम करने पड़ेंगे। अगर हम अनेक प्रोग्राम करेंगे तब हम सब पाएंगे। तो माइल्स टू गो एंड माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप, मैं पुनः दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्योंकि सभी को जागना होगा, सभी को मेहनत करनी होगी, तभी कुछ प्राप्त हो सकता है। और तीसरी बात यह है, सेम कंट्रीब्यूशन सेम एकोमोडेशन। जब एक पेंशनर, एक बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन देता है, उसी के इक्वल दूसरा बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जब वो हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाता है, उसको एकोमोडेशन वो क्यों नहीं मिलती, जबकि उसने सेम कंट्रीब्यूशन दिया है। ये एक हाई ऑब्जेक्शनबल पॉइंट है, इस पर जरूर प्राथमिकता दी जाए। वैसे तो पॉइंट सारे बर्निंग पॉइंट हैं, लेकिन क्योंकि बीमार लोग हो जाते हैं, अब कितना डेंगू चल रहा है, कोरोना फैला, ये फैला, और सब जो किसी को जो आज डेंगू हो जाता है। दीक्षित जी वाइंड अप करिए। तो इसलिए मेरा सुझाव यही है, मेरा सजेशन, मेरी प्रार्थना ये है कि जो 4-5 पॉइंट मैंने दिए हैं, इनको हाईलाइट करके और मांडविया जी को तुरंत लिखा जाए कि अगर मांडविया जी नहीं करते हैं तो इसके लिए हम नेशन वाइड स्ट्राइक करने के लिए, आंदोलन करने के लिए तो रेडी है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूं, जैसे कि हमें आदेश दिया गया है। जय हिंद। बिल्कुल सही है दीक्षित जी। लेडी डॉक्टर के साथ में जब लेडीज़ भी आएगी और जेंट्स भी ज़्यादा पहुंचेंगे वहां पर, तो मैं सहमत हूं इससे।
और अभी मिस्टर करमरकर। Distinguished guests on the dais, respected BPS Managing Committee members, delegates from different parts of our country, affiliated associations and members. Myself, Pradeep Karmakar. Mr. Banerjee आ जाएं थोड़ा. NF Railway Pensioners Association, Guwahati. At the outset, let me offer my heartiest thanks and gratitude to BPS for preparing such a nice and long record encompassing all the nook and corners of pensioners, which are the burning problems he has covered, and almost all the issues and the problems which are yet to be solved have been brought out in the form of resolution. At the same time, I like to highlight a few points for your kind information. Firstly, there are so many affiliated organizations and associations under BPS, but we have not seen any list of such members or associations, including their performance, what they are doing. NF Railway Pensioners Association believe that the performance of all the brother and sister association under BPS is dependent on the successful working of BPS also. SL Sharma. In this connection, I shall earnestly request to incorporate the performance of the associations under BPS, whether good or bad, so that they can bring about improvement in their performance and contribute positively to the development of BPS. Moreover, secondly, it has been observed by NF Railway Pensioners Association that the secondary family pension granted to unmarried widow, daughter, and divorced daughter's pension, they have prepared a joint procedure order which is not being followed uniformly all over the divisions and even in other railways. They have included a clause which is called no objection clause, which is to be taken from all the living family members of the deceased railway employee, and practically it has become very difficult on the part of the claimant of secondary family pension, because we all know that those who are not entitled for family pensions at all, inclusion of their names and demanding no objection certificate from them, I do not think it is a wise thing. So I draw attention of BPS that this portion of the JPO needs to be changed, and if necessary, as a all India railway basis acceptance is necessary. So to bring this matter into the knowledge of the higher authority by BPS, we will welcome. In that case, it will be possible to get a uniform JPO to be followed by all over zonal railway uniformly, and gives a sigh of relief to the destitute claimant of unmarried widow, divorced daughter pension. And sometimes their family members are scattered and settled in different parts of the country and sometimes abroad. So making it impossible on the part of the claimant of secondary family pension to obtain the no objection certificate from them. So kindly give see this thing, sir, bring about changes in the JPO format all India basis. Thirdly, this BPS has covered almost all the points for which they deserve gratitude, and with all the important issues like additional quantum of pension, area DA, and the formation of 8 CPC, everything is there. Thank you, Pradeep. Thank you. I express my gratitude Sharmaji. once again, and we hope that we will continue to get your valuable advice and suggestion for the development of the associations spread over length and breadth of India. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. SL Sharma ji. नमस्ते दोस्तों, भोजन करके आए होंगे इसलिए एक बार ताली बजा दो दोस्तों बीपीएस के नाम पे।
थोड़ा जग जाइए थोड़ा सा। धन्यवाद। आई एम SL शर्मा, सेक्रेटरी EIBSN REA गुजरात। साथियों, हम लोग जैसे और भी मेरे से पहले बता दिया है, BSNL में DOT से या PNT से आए हुए रिक्रूटेड हैं और एब्जॉर्ब्ड हैं BSNL में। तो क्वार्टरली पेंशन मीटिंग अदालत है ना, BSNL नहीं करती है, क्योंकि वी आर हैविंग सो मैनी प्रॉब्लम्स सर। तो BSNL को है ना सर, वो क्वार्टरली अदालत भी करनी चाहिए पेंशनरों के लिए। ये बहुत बड़ा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि हर एक पॉइंट जो होता है ना उसके सर्किल में भी इफेक्ट करता है। देन because we are medical cases are pending due to that. Then after retirement there are some court cases and some departmental cases that they are solved in favor of the pensioner. Then again fixation of PO absorption of then all those, that procedure is to be done by the circle only. So CGM is supposed to do the some functional and non-functional promotions are pending like that. Some pension pay fixation, then some adding names of after death, some people family pension and dependent retired people and handicapped persons they are getting very much problem. If the quarterly adalat is being held, then those problem will be less. Then for medical, pending medical bills are very much throughout. Some cases are of COVID-19 first phase. Even if this CGM has conducted medical adalat, but then also problems are not solved. So many bills are pending. Also, this with voucher and without voucher, every year they are asking option, even if there are there are clear instructions from the headquarter. Then CCA, attitude of CCA Gujarat is not good towards the pensioner association. They are not issuing minutes of pension adalats, and they are camping for DLC this month, but they can arrange very well in BSNL offices so that any nook and corners residing our pensioner can go to any BSNL office there and can give the DLC. So otherwise, if DLC is not given in time, the pension will be stopped. Then CCL also not updating the KYP. These details are not updated timely. Identity cards are also not being given timely. Then, as you know, CGS, why pensioners should get referral letter and go to Empanel Hospital? It is not known. Because when Empanel Hospital is there, they are going to pay everything. Nowadays, there is an order for 75 years and above pensioners. They can directly go to the Empanel Hospital without reference letter. But they have to again come to wellness center to get it, write down the tests and diagnosis. So when the person is of 75 years or pensioner, why he should run here to there for writing for CGS medicines and all those things? Then for the new members, they are not accepting KSDD manual application. Then these prescribed medicines or branded medicines are not being given. No latest equipment are being given like PAP, knee replacement equipment, inhalers. The old, they are giving the equipment. Sharma ji, thank you. और हर एक डिस्ट्रिक्ट में चाहे वो CGSS हो, नॉन CGSS कवर एरिया हो, एम्पेनल हॉस्पिटल होना चाहिए जिससे आदमी है ना वो इमरजेंसी में जा सके। और पेंशन रिवीजन के लिए जो मिस्टर दहिया जी ने बोल दिया कि भाई अब तो कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है, तो सब मिलके, और 7 साल से वी आर वेटिंग फॉर द पेंशन रिवीजन। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू शर्मा जी। यू बैनर्जी फ्रॉम मुंबई इंश्योरेंस। Respected President and General Secretary and all the office bearers sitting on the dais, let me first of all, on behalf of our General Insurance Pensioners All India Federation, I must compliment Maheshwari for, in spite of his little bit handicap in his health and all,
But for the last few years, I find that he devotes so much of time and he takes so much of pains to continue this every month, that magazine, plus that all other attending the letters and complaints and all. And the work which he is carrying, it deserves a social compliment, for which a resolution must be passed by this August delegates present here. Number one, that is the proposal. Second, that in our industry, last time also in Nagpur, when this AGM was there, I proposed that in our industry, that general insurance is a public sector insurance companies, the 4 companies are working. There, that family pension, what government, all the retirees are getting 30%, banks are getting 30%, LIC it is come 30% recently. But in our industry, still that is not solved. I brought to the notice of the Maheshwariji earlier also, but till date, the 15% only family pensioners are getting. So it is a matter to be once again taken some in an important way to take up with the particular ministry concerned to see that our pensioners who are suffering, particularly those who are old, getting hardly 5,000 or 5,500 per month. It is very difficult for a widow to maintain her family today with the meager pension of 5,000, 5,500. Another point which again I want to bring to the notice, regarding this health insurance and all, I talked to Maheshwariji also. Nowadays, these hospitals are exaggerating their charges, bills, everything. Perhaps you are in the central government, you are going for the cashless and all. But what is our experience? We find, we are from the insurance company, we know that the moment you give them the hints that you have got a policy, the hospitals will immediately charge, which is actually 3 lakhs, they will charge it the 5 lakhs immediately. Policy high, so they will charge just like 100% more or 75% more than the original charge. And that way, that all this nowadays big hospitals are run by the big corporates. They are coming in that way. There is no regulation of the government. I suggest that there should be a regulatory body for the all India, all these hospitals to control, just like insurance is controlled by IRDA, banks are controlled by the Reserve Bank. The telephone is that there is a regulatory board. So there should be a regulatory board to control the hospital's prices and all. That will also help those who are admitting in the hospitals getting a better treatment in a cheaper rate. So that is my suggestion to take up on that basis. Another clarification I wanted that regarding that when the spouse and that pensioner both dies, if the daughter is there unmarried, whether she is widow or she is divorcee, then that if her income shows that getting from the father or mother some earlier fixed deposit interest of 10,000, then she is not entitled to get the pension. Now 10,000 in a year, can any lady, one person, can she manage to survive? But they are refusing that. There is a clause of the government that if it goes up to beyond the 10,000, then she is not entitled to get the pension which her mother was getting, or in the case of that spouse was getting. That this is the thing which I bring to the notice of this, particularly all the executives, to see that the amount ceiling, whatever is there, that should be raised to that certain reasonable amount, not that 10,000 per year, which must have done it some 15, 20 years back. So, since the time is already over, I once again thank to the BPS for giving us the opportunity on behalf of that our organization to speak and bring to the notice of certain very virtual points, very important points to be taken up by the BPS. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Mr. Mukherjee from Kolkata. मुझे लग रहा था सर कि हम ही परेशान हैं, पता लगा इंश्योरेंस भी परेशान है. Good evening, sir. I am Tapush Kumar Mukherjee, a delegate from CWD Pensioners Association, Nizam Palace, Kolkata. हरिमोहन शर्मा साहब. Respected Chairman, Honorable Secretary General
honorable guests and all members, representatives attending the meeting from different parts of India. It gives me great pleasure to welcome you all to this historic 68th annual general body meeting of Bharat Pensioners Samaj being held today at honorable city of India. Friends, probably you are all aware that the most efficient and able leadership of Bharat Pensioners Samaj, many problems regarding grant of pension for retired central government employees and unbearable injustice done to them with many irregularities for payment of their retirement benefits are being solved most efficiently since its inception at New Delhi. Now I would like to touch upon some intolerable problem being faced by the CGHS beneficiaries almost all over India for long. I hope and trust that our leaders will give due attention to these problems and take up the matter with the CGHS authority and request to issue necessary instruction for proper and appropriate solution. I therefore mention some problems hereunder. Number one, in case of emergency when CGHS beneficiaries consult private doctors for immediate relief of the patients, the doctors of wellness centers should be advised to accept the prescription of private doctors and allow all medical tests including various blood tests with medicines as prescribed by them. Number two, during emergency situation, most of private hospitals empaneled by CGHS authority refuse or deny admission of the patients on the basis of fake excuse of non-availability of bed and accordingly suggest to visit another hospital for admission of the patient. Direction should therefore be issued to all the empaneled hospitals to ensure immediate admission of the patient in consideration of acute emergency to give prompt relief to them. Number three, nowadays the most retired aged employees are found suffering from different various ailments, so one or two super specialty CGHS hospitals are required to be opened in all the cities and urban areas of every state for better and required treatment of all aged beneficiaries to avoid their harassment. Last but not the least, government should take necessary action for immediate release of all areas DA or DR which were not sanctioned in view of corona pandemic since 2020, considering improvement of the situation. Last of all, I again thank the Honorable Chairman and all the distinguished guests and representatives present in the vast gathering for allowing me to deliver my speech. Jai Bharat Pensioners Samaj. Namaste. Thank you, sir. Now, Mr. Harimon ji, please. अभिमन्यु नायक साहब, अभिमन्यु नायक साहब. डेस्क पर बैठे मेरे सभी सम्मानित एवं परमादरणीय बुजुर्गगण, मैं पहले अपने पेंशन मंच जो भारतीय पेंशन मंच हमारा बना हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। हमारे जो पेंशनर हैं वो दुखी थे, परेशान थे। जिस विभाग में जाते थे वहाँ उनको हे दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि जिस विभाग में कार्य करते थे उसी विभाग में उस पद के जो जूनियर थे वे उनके प्रति आपके सोचते थे कि इनको क्या दिया जाए। समस्याओं का समाधान नहीं होता था, इसलिए भारतीय पेंशन मंच की स्थापना हुई। साथियों, इसमें हमने अपने पेंशन मंच के लिए अपने माहेश्वरी से प्रार्थना करी। इसके बाद में उन्होंने हमारे माही जी को डेप्यूट किया कि आप जाकर मुजफ्फरनगर में इनका काम देखेगा, उनकी समस्याओं का समाधान कराएगा। इसके बाद
2017 में हमारे भारतीय पेंशन मंच की स्थापना हुई और हमारे विधिवत 2 बड़े कार्यक्रम भी हो चुके, जिसके अंदर हम लोगों ने जोड़ करके पोस्ट ऑफिस, रेलवे, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, डिफेंस, बैंक, LIC, स्थानीय राजकीय विभाग, उन सबको एकत्र करके हम लोगों ने भारतीय पेंशन की स्थापना की। और इसके बाद 2 हमारे बड़े कार्यक्रम भी हो चुके। एक 75 साल से ऊपर वालों को हम लोगों ने सभी को सम्मानित किया था, जो भारत प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत 75 साल पूरे होने पर कार्यक्रम किया गया था। उसमें हमारे माही जी का भी आपके सहयोग रहा। साथियों, ये हमारा हुआ। अब मैं अपनी समस्याओं के बारे में आपको बता दूं, चूंकि समय बहुत कम है। पहला हमारा ये है कि रेलवे विभाग में 60 वर्ष से ऊपर वालों को रेलवे फेयर में कंसेशन दिया जाना चाहिए, जो नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, सेवानिवृत्त साथियों के लिए अतिरिक्त कम से कम 2 फ्री यात्रा का प्रावधान रखा जाना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी पीरियड में वो कोई भी छुट्टी ना कट जाए, इसलिए वो LTC का सुविधा नहीं ले पाते। ऐसे 2 फ्री आपके अतिरिक्त फ्री यात्रा का प्रावधान होना चाहिए। तीसरा, सभी सीनियर सिटीजन के लिए सरकारी विभाग में अलग से काउंटर का प्रावधान होना चाहिए, रेलवे के अंदर भी, क्योंकि पता चला रेलवे के अंदर अलग से और सीनियर सिटीजन के लिए काउंटर वो बंद कर दिया गया है। ये सभी विभाग में, बैंकों के अंदर, डाकघर के अंदर, सभी के अंदर अलग से काउंटर होने चाहिए। इससे अगला, जिन हमारे साथियों की जन्मतिथि 30 जून और 1 जुलाई है, अथवा 31 दिसंबर अथवा 1 जनवरी है, कोर्ट के नियम के अनुसार जिन्होंने अपने 30 जून को अपना समय पूरा कर लिया है या 31 दिसंबर में कर लिया है, 1 जुलाई या 1 जनवरी से उनको इंक्रीमेंट मिलता है। जिन लोगों ने कोर्ट के अंदर केस किए उनका तो आपके मिल गया। सामान्य एक नियम लागू करना चाहिए भारत सरकार को। अगला यह है कि सभी से अपील है कि अपना एक सामूहिक एजेंडा रखें कि जो पार्टी 8वें वेतन आयोग को अपने एजेंडे में रखेगी, हम लोग उसका साथ देंगे। जो हमारे साथ, हम उसके साथ। जो हमारे साथ में हमारे भाग्य फैसला करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करती है, ऐसे का हमें बहिष्कार करेंगे। और अगला यह है, 18 महीने के एरियर का भुगतान पेंशनरों को अवश्य किया जाना चाहिए। सीतारमण जी कहते हैं हमारे पैसे की कमी नहीं है, योगी जी कहते हैं हमारे पैसे की कमी नहीं है, तो पैसे की कमी है तो हमारा 18 महीने का जो हमारा भुगतान, उसको क्यों अपने पास में आपके बाधित किया हुआ है, उसका भुगतान होना चाहिए। अगला हमारा ये है कि हम लोग इतने सीनियर सिटीजन हैं, पेंशनर हैं, वे ग्रेजुएट हैं, उनके बच्चे भी ग्रेजुएट हैं, उनके परिवार के भी ग्रेजुएट हैं। अब मैं ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अपना एक प्रतिनिधि विधान परिषद में और आपके अन्य के आपके सभा में भेजना चाहिए। अब अगला एक आखिरी ये है कि सभी जितने भी हमारे पेंशन एसोसिएशन हैं, हमारे पेंशन समाज के लिए कम से कम अपने संगठन की तरफ से 5,000 रुपया एक अतिरिक्त अवश्य आपके भुगतान किया जाना चाहिए पेंशन समाज, भारत पेंशन समाज के लिए। ऐसा कितने पेंशनर कर रहे हैं? एक हम लोगों ने ये किया है कि हमारे पेंशनर लोग जो अकेला अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उनके परिवार में जाकर के उनकी सुख दुख की समस्याओं का समाधान करने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। हम लोगों ने किया है कि जो हमारे पेंशन लोग 80 साल से ऊपर हैं, 90 साल से ऊपर हैं, उनके परिवार में जाकर के उनके लाइफ सर्टिफिकेट हम लोगों ने बनाने प्रारंभ कर दिए हैं और कर रहे हैं। और अधिकार जो मांगने से नहीं मिलता, अधिकार छीनने से मिलता है। इसलिए आप लोगों को अपने अधिकारों से सचेत रहना चाहिए। जो आपको कहते हैं आप बुढ़ा हो, अमिताभ बच्चन का बुढ़ा होगा तेरा बाप। हम बुढ़े नहीं हैं, बुजुर्ग नहीं हैं, हम अनुभवी युवा हैं। हमारे पास में अनुभव का इतना बड़ा खजाना है, जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमने किया है, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जज्बात होना चाहिए, और जज्बात के बाद में आपके पास जो जिहाद कर सकते हैं तभी हो सकता है। पहले जज्बा, फिर जज्बात, फिर इसके बाद आपके हिम्मत,
फिर क्या बात है, आपके जिहाद बोला जा सकता है, ते भी आप कर सकते हैं, आपके हिम्मत होनी चाहिए। हर वक्त हर समय के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको अपने बुजुर्ग के प्रति, अपने सम्मान के प्रति आपको जागृत रहना चाहिए। एक संगठन यदि कोई परेशान है, उसके संगठन के लिए दूसरे संगठन को साथ आना चाहिए। ये ना देख आज तुम्हारे घर में आग लगी हुई है, कोई तुम्हारे नहीं आ रहा है, तो कल उसके घर में आग लगी, आप कैसे जाएंगे? एक दूसरे की सुख सुविधा को ध्यान रखें। यदि हमारा पेंशनर बुजुर्ग लोग कोई बीमार है, काउंटर पर परेशान है, बाजार में परेशान है, खुद सोच करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। बताओ तुझे किस चीज की आवश्यकता है। साथियों, अब मैं इतना ही कहूंगा, आप सब एकत्र रहें, साथ रहें, एक दूसरे साथ दें। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दे, पीछे से आवाज नहीं आ रही, एक लीजिए, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भारत पेंशनर समाज जिंदाबाद, भारत पेंशनर समाज, भारत पेंशनर समाज, भारत पेंशनर समाज, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। शर्मा जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी की इतनी बुलंद आवाज के बावजूद हमारे कुछ लोग सो रहे थे। मैं देख रहा था कि लोग इसमें भी सो रहे, तो कैसा करेंगे? अभिमन्यु नायक साहब, कम से कम ऐसे आवाज में तो उठ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सोए हुए भी उठ सकते हैं। चलिए अभिमन्यु नायक साहब, आपने कोई भी आगे स्लोगन नहीं करेगा। We have given it writing to the police. Please behave ourselves. अभिमन्यु नायक साहब। हाँ जी, Honorable President, Secretary General Master Sahib, our other dignitaries on the dais, brothers and sisters from all over the country. खान साहब, I am Abhimanyu Nayak, Secretary, General Secretary, AICGPA Odisha Cuttack. I have with my elder brother, Mr. Kishore Patnaik, President of our Sambalpur unit. We have submitted a 5-point resolution passed by our association to BPS for discussion in this AGM during the month of August. I shall discuss the same in nutshell. कुछ पॉइंट्स है जो मेरे पूर्ववर्ती वक्ता जो है वो डिस्कस करके गए हैं, मैं उस पर डिटेल्स में नहीं आऊँगा, सिर्फ नटसेल में बताऊँगा। इशूज रिलेटेड टू CGHS में जो 75 ईयर्स जो लोग हैं उनको इमरजेंसी में कुछ कंसेशन दिया जाता है, नॉन इमरजेंसी में कंसेशन नहीं दिया जाता है। ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये उसको दूर करना चाहिए। ग्रांट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंसेस to widow, divorced, unmarried daughters in receipt of family pension, ये रेलवे में देखा जाता है। और अदरवाइज ये कुछ सम जोन्स ऑफ रेलवेज, नॉट ऑल, इसको जो मैंने उसका क्या है कि उसका कॉपी दिया था एनेस्टर्स के हिसाब से, शायद हमारा BPS हेडक्वार्टर में होगा। ये जो मैं 12 अगस्त को दिया था, उसमें जो ऑर्डर है वो ऑर्डर का कॉपी एनेस्टर के रूप से दिया था, उसको शायद कंसिडर करेंगे। डिफिकल्टी फेस बाय फैमिली पेंशनर्स ड्यू टू मर्जर ऑफ आंध्र बैंक विथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये रेलवे का इशू है। हमारे बहुत सारे जो हमारा AICGPA उड़ीसा कटक है, इसमें पोस्टल, रेलवे, इनकम टैक्स, सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पेंशनर्स मेंबर है। डिफिकल्टी फेस्ड बाय फैमिली पेंशन ड्यू टू मर्जर ऑफ आंध्र बैंक विथ यूनियन बैंक। आंध्र बैंक का CPPC वो हैदराबाद में है और यूनियन बैंक का जो है ये दिल्ली में है। क्या है कि आंध्र बैंक का जो रिकॉर्ड था वो अभी तक CPPC दिल्ली को ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, इसीलिए जो फैमिली पेंशनर्स है उनको दिक्कतें हो रही है, उसको दूर करना चाहिए। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ Department of Post instruction regarding counting of induction period of training for grant of financial upgradation under TBOP and BCR, ये 2016 से ये ऑर्डर इश्यू हुआ है। ये अभी तक हमारा उड़ीसा सर्कल में पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। क्या है कि हमारा जो हेड ऑफ द सर्कल है वो नोटिफिकेशन फॉरवर्ड करके चुपचाप बैठ जाते हैं। डिविजनल हेड है, ये सिर्फ क्या करते हैं, उनका OM निकाल देते हैं, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं DDO के पास, हेड पोस्ट ऑफिस में। हेड पोस्ट ऑफिस वाले कुछ करते नहीं है, इसीलिए ये 7 साल से केसेस पेंडिंग है। उसके बाद है
जो इंक्लूजन ऑफ डॉटर इन लॉ इन द परव्यू ऑफ फैमिली डिस्कशन हो चुका है, मैं उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। होल्डिंग अप नेशन वाइड पेंशन अदालत इन वन डे, एक ही दिन में पूरे भारत में क्या हुआ, अदालत पेंशन अदालत हो जाता है, ये सभी ऑल डिपार्टमेंट का। इससे बहुत सारे दिक्कत है, क्योंकि अगर आपका एसोसिएशन रेलवे को सीमित है तो आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो एसोसिएशन है उड़ीसा में, ये सारे एसोसिएशन का डिपार्टमेंट का पेंशन मेंबर्स हमारा पेंशनर्स हमारा मेंबर है। हम कहाँ जाएंगे? एक दिन में रेलवे का है, टेलीकॉम का है, पोस्टल का है, इनकम टैक्स का है, सबका एक ही दिन में है। हमारा जो ऑफिस बेयरर्स है, ये सारे जो डिग्निटी जो उनका अथॉरिटी है, अथॉरिटी को हम फेस नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ ना, पिछले जो पेंशन अदालत हुआ था अक्टूबर 23 को, शायद अक्टूबर 23 सितंबर 23, वो उस दिन क्या हुआ, उड़ीसा में हॉलीडे था, दिल्ली में नहीं था, तो दिल्ली वालों ने पेंशन अदालत शुरू किया। उड़ीसा में कोई नहीं गया, उनका ना डीपीएस शामिल है, ना असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल है। उनको एक पीए को, पोस्टल असिस्टेंट को दिया गया कि तुम पेंशन अदालत कंडक्ट करो। आप सोचिए, अगर एक पेंशन पीए, एक पोस्टल असिस्टेंट, पीएसीओ, सर्कल ऑफिस का पीए अगर पेंशन अदालत कंडक्ट करेगा तो ये क्या हमारी बात क्या सुनेगा और क्या करेगा? ये नहीं हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए डेट फिक्स करना चाहिए। उसके बाद है क्या कि इंक्लूजन ऑफ डॉटर, वो तो मैंने बता दिया है। सम फैसिलिटीज टू सीनियर सिटीजन, ये हमारा जो मेंबर्स है उनका कंसर्न है। कंसेशन इन ट्रेन फेयर्स इन ऑल क्लासेस, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज बियॉन्ड द एज ऑफ 65, hassle free issue of a driving license beyond 70 years of age, proportional increase of basic pension each year beyond 61 years of age. Next sir, please. हाँ, खत्म हो गया है। Income tax minimum slab from 7 lakhs to 10 lakhs. Last point, it is increase in the rate of grant in aid to recognized pensioners association. ये पिछले जो VC हुआ था, हमारा माहेश्वरी साहब ने ये पॉइंट हम भी रेज किए थे, और माहेश्वरी जी ने भी यही पॉइंट रेज किया है कि ये 75,000 जो दे रहे हैं, उसके बाद ये कुछ कंपोनेंट के लिए दे रहे हैं, 4 कंपोनेंट। ये 4 कंपोनेंट के बाद हम बहुत सारे एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, जैसे कि हमारा जो स्वच्छता अभियान है, वाटर कंजर्वेशन DLC जनरेशन, इसमें हमको कुछ खर्चा करना पड़ता है अपने फंड से, तो इसके लिए कुछ प्रावधान रखना चाहिए ग्रांट्स इन एड में। तो एटलीस्ट इट शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 75,000 to 1,50,000। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मिस्टर खान सर, इसके बाद श्री विजय रगड़े नागपुर से। चेयरमैन सर, आदरणीय महेश्वरी सर, विजय रगड़े आ जाओ भाई। मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथिगण, आर.के. दीक्षित आगरा से, डेलीगेट साथियों और बहनों, आर.के. दीक्षित, मैं N.A. खान, डिविजनल सेक्रेटरी पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ डिवीज़न, सबसे पहले आप सबको सलाम पेश करता हूं बज़ुबान शायर, और मेरे सलाम का जवाब आपकी तालियां देंगी। जो बार बार मन से कहा जा रहा है कि सो गए हैं, मालूम होना चाहिए कि आप सब जग रहे हैं। गुलों ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, गुलों ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमां से सलाम भेजा है। हो मुबारक ये अधिवेशन आप सबको, लखनऊ के नवाबों ने ये पैगाम भेजा है। सर, मैं जो बातें रिपीट हो चुकी उनको दोहराने नहीं चाहता हूँ। हमारे यहाँ रेलवे में फैमिली पेंशन में बहुत डिले हो रहा है, जिसमें 80% बैंक्स की निष्क्रियता की वजह से हो रहा है। रेलवे डिपार्टमेंट से जो भी फैमिली पेंशन के केसेस जाते हैं PPO बन के, वो सीधे सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर, जिसको CPC कहते हैं, जाता है। डेढ़ से 2 साल तक वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा है, पर्सनली इंस्पेक्टर जाने के बावजूद। उनकी नोटबुक नहीं आती है, पेंशन बुक नहीं आती है, जिससे फैमिली पेंशनर सफ़र कर रहा है 2.5 साल से।
हमारे अकेले लखनऊ डिवीज़न में लगभग 100 से ऊपर केसेस हैं, जिसमें 80% CPC की कमी से। नंबर 1, नंबर 2 एक लाइन में सर, हरदीप सिंह, जो हमारा हरदीप सिंह जी। 80%, 80 ईयर्स, 85 ईयर्स, 90 उसके आगे जो अभी चल रहा है, वो पेंशन जिसको CPC के द्वारा ऑटोमेटिक बढ़ा देना चाहिए, नहीं बढ़ा रहा है। डिस्पाइट ऑफ सेवरल लेटर्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तक कि हम लोग अकाउंट से भी लेटर भिजवा रहे हैं, उसके बाद भी सन 16 की 80 साल की पेंशन नहीं बढ़ रही है। मैं भारत पेंशन समाज, खासकर महेश्वरी जी से और अब तो हमारे पूर्वोत्तर रेलवे के आदरणीय रमन जी ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हो गए, उनसे अनुरोध करूँगा कि बैंक्स कैसे एक्टिव हों ताकि फैमिली पेंशनर्स को जल्द से जल्द सर पेंशन मिल सके, कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए। क्योंकि मेरी पर्सनल बात हुई है, इवन DRM ये कहता है क्या करूं, बैंक नहीं दे रहा है, मैं इंस्पेक्टर भेज के परेशान हूं। इस तरह से 143 केसेस खाली लखनऊ डिवीज़न में पेंडिंग है, जिसमें 80% नेग्लिजेंस ऑफ बैंक है। काइंडली इस पर कोई एक रणनीति बनाकर ज़रूर ध्यान दिलवाएं। धन्यवाद। धन्यवाद खान साहब। हरदीप सिंह सर। खान साहब, ऐसा है वो फैमिली पेंशन केसेस का फैमिली प्लानिंग हो चुका है, वो वहीं रुका हुआ है। वो बहस पे बैठे सभी महोदय को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, अपने पेंशन भाइयों बहनों को। मैं सिर्फ प्रॉब्लम तो महेश्वरी जी MP उनकी टीम बहुत बढ़िया बुंदेले जी, धनराज बुंदेले नागपुर से रही है। मैं तो सिर्फ आपको बधाई देने आया हूँ कि आप लकी हैं जो 60 साल से उम्र जी रहे हैं। 88% जो आपके बहन भाई या साथी हैं दुनिया छोड़ चुके हैं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। दूसरी ये है कि जिन भाइयों को पेंशन मिल रही है उनको अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। सो आपको इस चीज़ के लिए बहुत खुशी रहना चाहिए। और ये तीसरी बात ये मैं कहता हूँ कि जिन भाइयों को पेंशन नहीं मिल रही उनकी एफर्ट्स के लिए लोगों को जोर लगाना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी पेंशन जो है मिल जाए। हमको दिए थोड़ा सा मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए तो सभी रोते हैं। सो बात ये है कि हमेशा ही खुश रहो, अपना एक्सरसाइज करो, पेट ना बढ़ने दो, है जी। तो फल फ्रूट खाओ, सब्जियां खाओ और खुशी रहो। थैंक यू। नागपुर से धनराज बुंदेले जी। मैं सेक्रेटरी बोर्ड का जनरल जो भी माहेश्वरी साहब काम कर रहे हैं उसके समर्थन करता हूं, और लांजेवर साहब ने जो भी अभी तक प्रपोजल रखे और जितने भी लोग यहाँ आए उन्होंने अपने प्रपोजल रखे, उनका मैं समर्थन करता हूँ। माहेश्वरी से रिक्वेस्ट है कि उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और कंटिन्यू। धन्यवाद। थैंक यू। कालूराम जी, कालूराम जी आइए सर। उसके बाद श्री रावेजा, रावेजा साहब हैं? हाँ, BD रावेजा जी। RK दीक्षित। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी और सम्मानित मंच तथा भारत के कोने कोने से पधारे हुए मेरे पेंशनर साथियों और बहनों, मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि 1/1/16 से अपने को 7वां वेतन आयोग मिला, लेकिन हमारे सारे भाइयों को, सारे पेंशनरों को ये लाभ मिल गया कि नहीं मिला। BSNL का तो उन्होंने जवाब कह दिया कि हमें 7 साल से नहीं मिला, लेकिन जो भी पेंशनर है और वो उसमें से भी ज़्यादा रेलवे के हैं जिनकी पेंशन पोस्ट ऑफिस के द्वारा भुगतान की जाती है, तो राजस्थान में एक भी पेंशनर के वो 7वें वेतन आयोग का रिवीजन नहीं हुआ, उसका रिव्यू नहीं हुआ। और क्योंकि वो तो देखे पोस्ट ऑफिस वाले करेंगे और रेलवे वाले वो उनका कोई ध्यान है नहीं, इसीलिए मैं मंच से आग्रह करूंगा कि चीफ पोस्ट मास्टर
जनरल चित्तौड़ जयपुर से पूछे क्या आपके अधीन कितने रेलवे के पेंशनर पोस्ट ऑफिस से भुगतान लेते हैं और उनका रिव्यू हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि ये मेरे नोटिस में इसीलिए आया, कभी 5-7 दिन पहले एक कौशल्या देवी जो रेलवे की पेंशनर है, वो से मतलब गांवों में रहती है, उसने मेरे को लिखा कि मैंने 2 बार शपथ पत्र दे दिया, मेरी जन्म तारीख 2/3/1930 है और मुझे अतिरिक्त पेंशन नहीं मिल रही। जब उसकी फाइल मैंने चेक की वहाँ हेड पोस्ट ऑफिस में, तो उसका पीपीओ था 1986 के उसके पति के नाम का ताराचंद, और जब रिव्यू नहीं हुआ इसके कारण से पोस्ट ऑफिस वालों ने उसको 20%, 30%, 40% वो दिया नहीं, और रिवीजन जो पीपीओ वो 1986 से अजमेर से जारी किया हुआ था, तो उसका रिवीजन 1996 में हुआ, न 2006 में हुआ और न 2016 में हुआ, और 16 में नहीं होने के कारण उसको वो जो लाभ है वो नहीं मिल रहा है। अतः मेरा अनुरोध है इस सभा में कि मतलब उनका रिवीजन करवावें। मैंने पेंशन पोर्टल पे भी इसको डालने की कोशिश की, क्योंकि वो 1986 का था, और लेकिन पेंशन पोर्टल के अंदर बैंकों का नाम लेते हैं, लेकिन वो पेंशन लेती है पोस्ट ऑफिस। वैसे पोस्ट ऑफिस भी बैंक हो गया है, भारत का पोस्ट ऑफिस भी बैंक हो गया है, लेकिन उसका वो उसमें सॉफ्टवेयर में उसका नाम नहीं है, जिसके कारण से उसकी वो दर्ज नहीं हो पाया। और साथियों, जैसे बहुत सारे जनों ने साथियों ने बता दिया है, मैं उसको रिवीजन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आकोड़िया मतलब जो अपने डीए जो दिया जाता है, जिसके बारे में 1948 में वो कमेटी बैठी थी, उसका रिवीजन किया, और उन्होंने मतलब 4 आदमियों को 3 यूनिट मान करके 3 यूनिट का रहा, उसमें माँ बाप का है नहीं, इसीलिए 6 यूनिट का होके और वो देवे करे। अच्छा, पेंशन क्या जो रेशो है, पेंशन जो कमीशन बैठता है करता है, उसका जो रेशो है, जैसे मैक्सिमम है 1,25,000 और मिनिमम है 9,000, तो ये 1/14 का रेशो है। इसको 1/8 का रेशो किया जाए और मिनिमम को बढ़ाया जाए, क्योंकि आपको बता दूं कि 19 सितंबर 1968 को एक दिन की टोकन स्ट्राइक की थी पूरे भारत में, जिसमें मतलब बहुत सारे आदमियों को गोली भी लगी और वो शहीद भी हुए बीकानेर में। चलिए सर, थैंक यू तो सर। उसमें न्यूनतम पेंशन का जो रखा था वो मसला, वो आज तक मतलब सही नहीं हो पाया, लेकिन दूसरी जो 10 मांगे थी उसमें से हुई, मतलब 68 में रखा था जैसे बोनस का देना, और बोनस 77 में अपने को मिला। इसी प्रकार से प्रमोशन के एवेन्यू थे, ओवर टाइम के मामले थे, ये सब हुए। अच्छा, इसी प्रकार से फैमिली पेंशनर थैंक यू सर, थैंक यू। 5 मिनट हो चुके हैं। फैमिली पेंशनर एक फैमिली पेंशनर है जिसका पति को मेडिकल का अलाउंस मिल रहा है, तो उसकी मृत्यु होने के बाद में उस फैमिली को ऑटोमेटिक मेडिकल अलाउंस मिलना चाहिए। ऐसे 3 केसेस मैं डील कर रहा हूँ। वो 1 और थैंक यू आपका सर, बहुत थैंक यू वेरी मच आभार सर। कि मेरे को आपने सुनने की कोशिश की। थैंक यू। वो राइट अप दे दीजिए साहब को। भोलानाथ डे साहब है, भोलानाथ डे। मैं आपके बाद वाले कॉल कर रहा हूँ, आप आइए। Namaskar to everybody. I must pay my sincere compliments to all the members, office bearers of the Bharat Pensioner Samaj for their devotion, dedication for the welfare of the pensioner, as I see from their monthly magazine. Now my small point is that dependent handicapped children of the pensioners, they are eligible for family pension in their turn, that when both go out,
as well as for the CGHS facilities. But when they get married, they are eligible still for the family pension, but they are not eligible for CGHS facilities. My humble request to the members of the association is that the matter should be taken with the concerned authorities that married children, dependent children married, they should also be eligible for CGHS facilities. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. भोलानाथ डे साहब, भोलानाथ डे साहब रामपुर हाट से है, मुझे हर साल फोन करते हैं, साहब ये बताएं रामपुर हाट कहाँ पर आता है? हाँ, मैं सोचता रहता हूँ रामपुर हाट किधर होगा ये, रेलवे वाला ही हूँ लेकिन. Respected President, respected dignitaries on the dais, respected Maheshwari ji, our Secretary General, and delegates. M.R. Reddy. I am from West Bengal, Rampur Hat, near Santiniketan. Near Santiniketan, Bolpur. अच्छा, संत बुद्ध नगर, okay. I here wholeheartedly I support this secretary report. There is no scope to criticize this report by any means. It is a Himalayan task he bears for us, reflected in this report. The problem of pensioners I experienced and wanted to represent here. While I reading the report, I found it has been already included in the resolution. In my opinion, the case he described here are the same which are lying unattended in case of 1,000 pensioners all over the India. Many pensioners are unaware that how they deprived of their actual facility and payment. Except Pensioners Association, there is no government machineries to monitor the cases of the deprived pensioners. In these days of digital management, there should be a centralized grievance redressal cell in each of the ministry. Now I am not going to cite the cases I have represented and solved as because it is the association's primary duty to help the pensioners to get their legitimate facilities and payments. In case of dependent daughters, dependent daughters that family pension to the daughters is in very problematic condition. I only want to mention a social problem facing the family of deceased employee. When an employment awarded to a son or daughter of a deceased employee for survival of his family, it is experienced that within a few months, the compassionate appointee abandons his mother and minor brothers and sisters. To solve this problem, there should be a written agreement that the compassionate appointee must not abandon his minor brother and sister till they attain adulthood. Possibilities of it may please be considered. Every year, regarding the fund of the BPS, every year, every member should contribute only 100 in the fund of BPS as donation, which will accumulate. You can see the 10 lakh member if donate 100 rupees. With the prayers to Almighty for good health of our hope, the Secretary General, Sri Maheshwari ji, and the MC, I concluded my representation. Thank you to all BPS. Jindabad. Pensioners Unity. Jindabad. Thank you, Desab. Thank you very much. Mr. M.R. Reddy. Sir, ये M.R. Reddy साहब विशाखापट्टनम से है, East Coast Railway. Respected President, Secretary General. व्यास साहब है क्या? बीवी व्यास. Today, आज का दिन बहुत शुभ दिन है. हम बहुत खुश हैं कि हमें मौका मिला है. इस मंच में बात करने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. मैं बहुत ही अभी तक जितने डिस्कशन हुए हैं, करीब सभी भाई लोग अच्छी तरीक़ा से आप सबको सुनाया गया है. इसके बाद अभी जो न्यू जनरेशन है, न्यू रिटायरीज जो है, उसको भी पार्ट लेना है. हमारे महसी साहब कितना साल से
कर रहे हैं, उसके साथ हमको भी कुछ सीखना है, हम भी कुछ काम करना है, हमको भी मौका मिलना है। मैं एक तो किताब दिया हूँ महेश्वरी साहब को और शिवराज मिश्रा साहब को भी मैं दिया हूँ। उसमें क्लियर सभी चीज़ लिखा हुआ है, किस तरह से पे कमीशन 3 से 7 तक जितना पे कमीशन मिला है, जितना फिक्सेशन हुआ है, कितना डीए दिया है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी है ही है। आदमी किसी तरह से भी कंप्लेंट जाता ही है, ये क्यों हो रहा है? इस चीज़ के लिए बहुत गौर से ध्यान देना है। मुझे उम्मीद है हमारा महेश्वरी साहब जो बहुत इंटरेस्ट से ले रहे हैं, हम उसको बीच बीच में कांटेक्ट करके भी मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है, जितना हमारा विशाखापट्टनम से हमारे 4 साल से कोविड-19 में अच्छा एक्टिव मेंबर्स गुजर गए हैं, इसके बावजूद नया मेंबर्स हम लोग बनाया गया है। इस नए मेंबर में भी एक्टिव पर्सन्स है, प्रीवियस डेलीगेट्स काम किया हुआ है। ये सब बहुत ही अच्छा कायदा से, सुविधा से, कानून द्वारा ही प्रस्तुत कर सकते हैं। रेलवे में 2 ही चीज़ है हिंदुस्तान में, एक है डिफेंस, सेकंड इंडियन रेलवे। ये 2 चीज़ ही हिंदुस्तान को चलाता है। अगर ये ठीक नहीं होगा तो देश कौन सा मार्ग में जाएगा? इतना उन्नति कैसे हो रहा है? हम अपने पिताजी भी नौकरी किए थे, उस टाइम से मैं देख के आ रहा हूँ क्या उन्नति हो रही है, और खुद ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप भी सब जानते हैं कि इसका कहाँ पर हमारा काम रुक रहा है। DRM ऑफिस में कुछ काम होता है, मेडिकल में जाते हैं उधर कुछ काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब लिख रहा है, कोई दवाई नहीं मिल रही है। इस तरीके से बहुत किस्म के परेशानी हमारे गूंज रहे हैं। इसलिए मुझे कुछ लग रहा है कि ज़रूर इसके बारे में हम सब मिलके, हम सब अपनी ताकत कमज़ोर नहीं समझिए, हम इतने अनुभव आदमी हैं ताकि हम सब मिलके इसको हासिल कर सकते हैं। ये मेरी बहुत ही गहरा उम्मीद है। मैं चाहता हूँ कि सब मिलके काम करना है, उनका हाथ स्ट्रांग करना है, उनका हर वक्त उनके पास प्रेजेंट होना है। और न्यू कैंडिडेट जितना है, मेरा रिक्वेस्ट है ऑल एक्टिव न्यू मेंबर्स को टाई अप करना है, जोन वाइज करना है, डिवीज़न वाइज करना है, कंट्रीब्यूट करना है, तब हम कुछ भी निभा सकते हैं। हम उस मंच तक पहुंच सकते हैं जहां तक हम सोचते हैं। बहुत धन्यवाद, ज़्यादा मैं आपका समय बर्बाद नहीं कर सकता। थैंक यू रेड्डी साहब, थैंक यू वेरी मच। व्यास साहब, रेड्डी साहब, हम भी ये चाहते हैं कि हर जगह ये भारत पेंशन समाज फैले, हर जगह उसकी मेंबरशिप बढ़े। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हम लोगों ने भारत पेंशन समाज के मैगजीन के लिए एटलीस्ट अपने कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। हर साल लोगों ने अपने मैगजीन का रिन्यूअल करना चाहिए, और हमारे जितने यहाँ जो डेलीगेट्स आए हैं उन्होंने एटलीस्ट 10-10 लोगों को तो भी मेंबर बनाना चाहिए भारत पेंशन समाज के मैगजीन के लिए एटलीस्ट, ताकि महेश्वरी जो इतना काम करते हैं महेश्वरी साहब, वो सब तक पहुँचे। मेरा एक सजेशन जी, आप अभी ऑनलाइन में हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा आप मीटिंग बैठाइए, बिल्कुल कितना डिवीजन में है, एक जोन लेवल में टाई अप करके उसका ऑल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बिल्कुल आप उसको स्क्रीन करिए। बिल्कुल। व्हाट आर दी टॉप रेड्डी साहब आपने कहा, मैंने आपके इंपॉर्टेंट में लिख कर रखा है आपका सजेशन, देखिए मैंने नोट किया। यस, वी डू एग्री विद यू एंड वी विल गो अहेड and how to improve the system since we are all railway brothers. Visakhapatnam. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, sir, please. Yes, sir. I am Mr. Bhargav Vyas. We will do it, sir. Representing my P&T and other Central Government Pensioners Association, Gujarat at Ahmedabad. I am pleased. इसमें मेरा रेलवे वाला बहुत ज़्यादा है, खान साहब भी है। I am pleased and obliged to give me an opportunity to speak before you and the August Janeke Dais. I have listed 9 items, out of which my predecessors have declared something, but I want to clarify in detail on certain 2 items and 2 new items. Raghav Babu. One thing is that in cases of deciding the family South pension, Central Railway, Guntakal.
the claim paper should be submitted while livelihood of the parents. In cases of a divorcee daughter, the instance may occur during livelihood or after death of the parents also. So this is a ambiguous thing, so that it should be regularized. Moreover, one thing is that some divorce cases may consented divorce of the community with 2 witnesses on stamp papers. That is a documentary evidence. Even though the AGM, that is the GM Manager Finance Pension, do not accept it and insist for a court decree. And court decree is not an easy thing, because it takes uncertain time. It is not necessary that it may be completed a stipulated date period. So it causes very hardship to the divorcee daughter. So that it should be enlightened also. Moreover, one new thing that is, sir, kindly sir, one visionary and innovative, 2 items are there. The funeral allowances in Gujarat government is also paid. So we desire that it should be introduced and take up a level at the central government also. A funeral allowance may be given to the pensioner on the occasion of death. Moreover, the ceiling of the pension and amount of the pension is revised every now and then. But it is not necessary. But it should be exempted in toto, so that we may not incur a expenditure of the pleader and other things also. Because vehicles are charging, we will not pay it, because we should be exempted totally, irrespective of this raising of ceiling of the atom. ठीक है? दूसरा एक चीज जो है, अपने रिटायरमेंट के बाद अपनों को एलटीसी नहीं मिलती है, और यही उम्र है जब शांति से आदमी घूम सकता है, जिसकी धार्मिक वक्ता भी बढ़ती है, और बच्चे लोग भी बड़े हो जाते हैं, तो उसको पढ़ाने का, इनको ख्याल रखने का, घर को संभालने का, ये सब जिम्मेदारी फ्री हो जाती है। और हम जब हमारी उम्र थी तब हम समझो को फ्री नहीं थे, सरकमस्टेंसेस ऐसे थे कि फर्जियात हमें पिलग्रिमेज में जाना है तो भी नहीं जा सकते थे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से ये इंट्रोड्यूस कराने की बात करें, जिससे कम से कम 2 या 3 या तो कितने भी समझोगे, जैसे 4 ब्लॉक इन सर्विस में है तो 2 दे देवे हमको, लेकिन 2 बार भी दे तो अच्छा है। ये मेरा न्यू आइटम है, और साहब को अच्छा लगे तो इसको रिप्रेजेंट करें आगे, समझे? ठीक है सर, थैंक यू वैस साहब। मैं सबका आभार मानता हूँ, और पर्टिकुलरली माहेश्वर साहब की ये नादुरुस्त तबीयत के सिवाय भी इतना ध्यान दे के ये जो सारे काम निपटा रहे हैं, इसके लिए मैं तो ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि इनको सारी उम्र दे और अच्छा स्वार्थ दे। इतना कह के मैं विरमता हूँ। धन्यवाद व्यास साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शायद पोस्ट एंड टेलीग्राम में का कनेक्शन थोड़ा टूट गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है थोड़ा, इसलिए एलटीसी नहीं दे रहे हैं, रेलवे वाले दे रहे हैं। हम आए ना पत्नी के साथ। ओके, थैंक यू। ये नोट्स लगेंगे सर। हाँ, एल राघव बाबू साउथ सेंट्रल रेलवे से, गुंटूर से। गुंटूर हमारे मिर्ची के लोडिंग के लिए बहुत फेमस है। Honorable and most respected persons on the dais and respected delegates, my heartful namaskar all. Dr. S.K. Sharma hai. First of all, the organization has given only 4 minutes. It is not sufficient to me to elaborate discuss this subject. So, I am presenting a memento to our Honorable Secretary General. First of all, I would like to say, in railways, after retirement, PRC passes are being issued, but every division, each division, they are owning their own pro forma. One employee from Hubli division has come to Guntur division. He is suffering to take his PRC pass because of uniformity. Pro forma is not available in the railways. Second thing,
association required accommodation to be provided by the railways. This is not being provided up to 2016. The railways has given accommodation to the pensioners association. In the year 2017, that was removed. Hence, we are suffering a lot. When we have to take a private accommodation, it is nearly 25,000, 30,000, 40,000 like Dr. that. S.K. Sharma. Like that. So, Sirsa Kumar Das. another thing, it is a small thing. When we are going to provide one banner in the divisional office or somewhere, the administration is not accepting. Further, the Bharat Pensioner Association is not extended to the south side of the India. So that should be improved, and so many number of associations are to be made. Second thing, CGH rates for every pensioner is only one thing they required, only medical facilities. That is CGHS. That was, rates of the CGHS were issued in the year of 2014. That after that 2014, only accommodation rate was revised. When we go to referral hospital, the referral hospitals are demanding amount from the pensioners, those who were joined in the railway hospitals. Why? Because they are saying that gloves are not covered in your CGS rates. Doctor's mask is not covered in the CH rates. Blades are not covering in the CH rates. Like that they are telling, and they are collecting money from the poor pensioners. They are charging nearly 10 to 20,000. Recently we fighted with the PCMD at zonal level and CMS at Guntur level. Then we succeeded. 2-3 persons, the referral hospitals refunded that amount. So, my personal request, please brought to this subject to the railway board and do justice. Why? Because all are aged people, day by day, their health will decrease. So, they need urgency and they need treatment in time. Further, when we go to the railway hospital, the railway hospital authorities, they are giving one referral letter in case of emergency. They are giving referral letter after half day, only they are giving. Up to that they have to sit in the railway hospital only. In this connection, I request, please, nowadays the net system and my speech, I would like to say, some remote areas, some villages, so many number of persons, they are suffering for treatment. They are not having a referral hospital. At the same time, railway hospital. Recently in Satyanpalli, nearby Guntur, it is nearly 70,000 to Guntur. One pensioner died because of non-availability of medical treatment. We already requested the higher official of Southern Railway, and at a divisional level, the hospital authorities never bothered about that. And at the same time, PCMD is also not agreed to provide one referral hospital in between Satyanpalli, Pidugurala, Nadikudi. Nadikudi is 160 kilometers. How the pensioner at the age of 70, 80, how they will come by a vehicle or by a train to
Guntur for their treatment. So, referral hospitals or insurance system may be adapted in railways also. So, I request, sir, please look into this matter. Thank you. Thank you very much. Raga Babu, please give your number. Our Joint General Secretary, Mr. Ramyanaman, is also from Railways. He was Deputy CPO. And kindly contact to me also in case of any emergency. I am looking after Railways. So if in case of any emergency, anytime you can contact it. And we will form our group of Railways and then we will see what to do. Thank you. Sir. Yes. I am Dr. S.K. Sharma. I think everybody has spoken on various subjects. I will not repeat the subject. Nobody has talked about Sampanna. Let me tell you, your PPO under Sampann has to get converted from 12 digits to 15 digits. Mr. Das? 15 digits, finally. Those who have any difficulty, they can contact me. I have rich experience on that and have done a lot of field work and research work on that. Finally, it gets converted. All PPOs have to get converted to 15 digits. First 2 digits are placed of the place of retirement. Okay? Next 4 digits are your year of retirement. Next 2 digits are the month of retirement, and last 5 digits remain permanent. Okay? Number 1. Number 2. So many people have spoken all. I think DIAS, with respect to DIAS, I am very well known with my humble service or problems to President Mr. Chauhan and also Maheshwari ji. I would like to thank them with their meager available resources. They have really done a wonderful job for organizing this occasion. Really, I really appreciate that on your behalf also. Number 2, I think it is my proposal to enrich the PPS. All pensioners may contribute to every year at least 1% to BPS so that they are not short of fuel. Money is the fuel to run the function. This is my proposal. 1% only, or voluntarily whatever they can do. Let me tell you that I am life member of PNRPA, Pension Retired and Persons Association, and founder member. I think that small organization in Delhi has got his own accommodation, office. Why not BPS? If somebody is at Nagpur or somewhere, they have such a rich building, they can survive and on the rent. Why not BPS? Please do something. This should be taken, is my proposal, and BP should take this hands-on work. And also, I'm giving. Right now, please, take it. Right now, 1,000 I'm giving. Okay? Thank you, sir. Thank you. Just now, SK Sharma, please. Okay. Okay? Do it like this. Without fuel, nothing will work. Let me tell you. No. Okay. Never. Thank you, Sharma ji. 8th कमीशन का रिक्वेस्ट सबने मान लिया है और my services to BPS are available 24 hours whenever they need it. Okay? Anybody want my help, you can take down my telephone number. It is world over known, 9871 520 462. I am repeating, 9871 520 462. Okay? Thank you, Sharma ji. Thank you. Everybody Thank you very much. tolerating me. All were sleeping, nobody is sleeping now. Okay? Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. आप रसीद ले लीजिए सर 1000 रुपये देने के बाद. देवचंद वर्मा साहब हैं.
नहीं सर के पास देवचंद सर कुछ पॉइंट्स आपके दे देंगे शर्मा जी। देवचंद वर्मा साहब, हाँ चलिए सर अब 10 शुरू करिए। बिल्कुल। नमस्कार डिस्ट्रिक्ट देवचंद वर्मा जी हैं, आइए। all committee members, secretary and delegate from all over India. I, Shishi Kumar Das, as a delegate from T-Board, Calcutta, putting some proposal regarding medical insurance. आप लोग जानते हैं इसमें मेडिकल इंश्योरेंस जो सीजीएच के कवर्ड नहीं है उसका कोई मेडिकल इंश्योरेंस और कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है सिवा मंथली 1000 रुपीज़। तो मैं भारतीय पेंशनर समाज से रिक्वेस्ट करूंगा जो मेडिकल इंश्योरेंस जिसका नहीं है उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हेड अगर ज़्यादा होगा तो उनका जो इंश्योरेंस प्रीमियम 60 एज पे उनका बहुत रिड्यूस रेट में होता है क्योंकि उनका बिजनेस इंटरेस्ट से वो मेडिकल इंश्योरेंस करने चाहता है। मैं ये इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि भारतीय पेंशन समाज सेवानिवृत्त संगठन आएगा मेडिकल इंश्योरेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम इंट्रोड्यूस करने के लिए एक जॉइंट एफर्ट हर एक यूनिट से वार्तालाप करके करने चाहिए। डीए ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो इशू करते हैं स्पेशली मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के से जब ऑर्डर इशू होता है वो कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री के बाद 2 महीना 1 महीना से ऊपर ज़्यादा लग जाता है सिर्फ एंडोर्समेंट के लिए। तो मैं भारतीय पेंशन स्कीम का जो बोलना चाहता हूँ जो उनका जो एंडोर्स कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है उसे एट पार विथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो डीए रिलीज़ करता है उसी टाइम उनको रिलीज़ करना चाहिए। दूसरा है एक सेंट्रलाइज बेनेवोलेंट फंड के लिए मैं प्रपोजल रख रहा हूँ। जो बेनेवोलेंट फंड एक सेंट्रलाइज होता है जो कैंसर जैसे भयंकर बीमारी से उसका मदद मिल सकता है। और तीसरा ये हमारा प्रपोजल है एक जैसे केवाईसी होता है नो योर कस्टमर, हम सिर्फ पेंशनर को आइडेंटिफाई नहीं करके उसको जो फैमिली है वो फैमिली मेंबर को एक जगह में इंट्रोड्यूस करके उसको कार्ड बनाने के लिए मैं प्रपोजल रख रहा हूँ। अंत में मेरा ये उपस्थिति देख के मैं अपना कंक्लूजन ड्रॉ करके मैं भाषण समाप्त करूँ। पीएनटी एसोसिएशन आमला अहमदाबाद ये महेश्वरी जी का फेलिसिटेशन करना चाहते हैं और साथ में श्री वर्मा साहब आपका नोट दे दीजिए ना अगर आप पॉइंट मंच पर विराजमान आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी जनरल आदरणीय महेश्वरी जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी पदाधिकारीगण, सभागार में उपस्थित सेवानिवृत्त संगठन मावड़, विभिन्न भारत के कोने कोने से आए हुए मेरे पेंशनर साथियों, सेवानिवृत्त संगठन मावड़ आए ना। मैं देवचंद वर्मा भारत पेंशनर समाज आगरा का महासचिव तथा ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का जिला सचिव। साथियों, भारत पेंशनर समाज की स्थापना आगरा में 2004 में माननीय श्री केसी पिप्पल, आर.एस. चौहान और पूरनलाल जी द्वारा हुई थी। केसी पिप्पल आज की तारीख में हमारे बीच में नहीं हैं, मैं उनको नमन करता हूं। वो भारत पेंशनर समाज के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। साथियों, मैं बहुत संक्षिप्त में 2-3 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात कि जो बीएसएनएल पेंशनर
का जो रिवीजन है वो कोर्ट से हो चुका है, लेकिन अभी शासन द्वारा आदेश लागू नहीं किए गए हैं। हालांकि भारत पेंशनर समाज के बीएसएनएल के सेक्रेटरी आदरणीय डीडी मिस्त्री साहब ने बहुत ही अच्छा पत्र डीओटी टेलीकॉम को लिखा है, फिर भी मैं इस मंच के माध्यम से चाहता हूं कि जो है उसको शीघ्र शीघ्र लागू करवाने की कृपा करें। दूसरा केस, साथियों, प्रदीप कुमार खरे, जितने भी भारत में पोस्टल डिस्पेंसरी थी वो सारी की सारी सीजीएचएस में कन्वर्ट कर दी गई थी, लेकिन जितनी भी पोस्टल डिस्पेंसरी हैं उनकी आज की तारीख में बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं आगरा से जानता हूं, आगरा में लगभग 9000 से अधिक कार्ड होल्डर और उनके परिवारीजन हैं, लेकिन केवल 2 डॉक्टर दिए हुए हैं, और 2 डॉक्टर क्या, उसमें 1.5 डॉक्टर है, आधा काम तो डॉक्टर जो है अपने ऑफिस वर्क में करता है और आधा समय वो ऐसे ही गुजार देता है। तो वहाँ हमारे जो है 60 साल से लेके 80 साल तक के जितने भी पेंशनर साथी हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे इंतज़ार करते हैं, और ऐसा भी होता है कि उनका नंबर नहीं आ पाता है और वो घर वापस जा चुके होते हैं। मेरे स्वयं के साथ में एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है, मैं समय से 8 बजे पहुंचने के बाद में भी 2 बजे तक मेरा नंबर नहीं आया है। साथियों, इस स्थिति में आई एम रनिंग इन 74 ईयर्स, ऐसी स्थिति में और क्या पोजीशन हो सकती है उस पेशेंट की जो बीमार है और 4 घंटे 5 घंटे वहाँ रहता है और फिर भी उसको डॉक्टर नहीं देख पाता है। मैंने इस संबंध में डायरेक्टर न्यू दिल्ली सीजीएचएस, एडिशनल डायरेक्टर लखनऊ तथा आदरणीय एससी महेश्वरी जी को भी पत्र लिखा है। बीएसएनएल के जो सीएचयू के जनरल सेक्रेटरी हैं वी वारा प्रसाद जी, उनको भी पत्र लिखा है कि इस स्थिति को किसी भी तरह से सुधारा जाए। साथियों, जब बीएसएनएल ने तो अपना पट्टा झाड़ दिया, उसने कह दिया सीजीएचएस लो, हम आपको पैसा दे देंगे, जो आप एक मुश्त पैसा भरोगे वो हम दे देंगे। उन्होंने तो पत्ता झाड़ लिया। हम लोगों ने सोचा था कि सीजीएचएस से हमें बहुत कुछ फ़ायदा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे तो बेटर ये था कि हम बीएसएनएल में रहते, 1-2 साल में हमारा भुगतान तो होता रहता। हालांकि बीएसएनएल की भी पोजीशन ये है कि जो 1000 रुपये का है वो 2021 से कोई भुगतान नहीं हुआ है, और जो बिल से संबंधित हैं, जो विद वाउचर है, उनका भी किसी भी तरह से कोई भुगतान नहीं हुआ है। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे साथी जो बीएसएनएल में हैं और हमारी ये दोनों एसोसिएशन एक साथ चल रही थी। पहले माननीय पूरनलाल जी थे, केसी पिपल जी भी हर मीटिंग में आगरा में आते रहते थे। आज अब वो हमारे बीच में नहीं हैं। पूरनलाल जी भी अब स्वास्थ्य उनका काम नहीं करता है, तो उन्होंने मुझे चार्ज पिछली वर्ष दे दिया था कि आप जिस तरह से बीएसएनएल एसोसिएशन को चला रहे हैं, उसके साथ ही मैं जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट को चलाता था बीएसएनएल और भारत पेंशनर को, आप भी भारत पेंशनर को चलाइए। आगरा के बहुत सारे साथी हैं, मैंने एक पैम्फलेट भी छापा था कि बीएसएनएल भारत पेंशनर समाज के सदस्य बनो, आपकी सारी समस्याएं भारत पेंशनर समाज सुनेगा। और मैं जानता हूं हमारे सेक्रेटरी जनरल, अभी आप लोग कहते हैं वो ज़्यादा एज के हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं, जिस तरह से वो काम करते हैं वो आज की तारीख में भी यंग हैं। मैं अपने सभी भारत पेंशनर के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि आज सुचारू रूप से उन्होंने ये एजीएम का संचालन हुआ है। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद वर्मा जी। हम लोग समझ रहे थे कि सीजीएचएस बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ से रेलवे से डिमांड थी कि हमको साहब सीजीएचएस दिला दीजिए। अब समझ में आया कि वो तो हम रेलवे ज़्यादा अच्छा है।
हाँ सही में गलत कर रहे थे हम, शायद हमको सुधारना पड़ेगा अपने आप को. हाँ सर. विलास भोरपे जी आहेत, सेवानिवृत्त संघटना मावळ पुणे. चूंकि हमारे महाराष्ट्र के हैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगाव है. विलास जी प्लीज. मंच पे बैठे हुए सभी पदाधिकारी और देश के कोने कोने से आए हुए डेलीगेट जो अब तक जाग रहे हैं, प्रदीप कुमार खरे, सबको एक नमस्ते. मेरा प्रदीप कुमार खरे नहीं है. ओके सर, मेरा पहला पॉइंट ऐसा है जो मैंने नागपुर में भी उठाया था कि जब मैं रिटायर होता हूँ या कोई भी इंडिविजुअल रिटायर होता है तो अपना 40% पेंशन बेच देता है, कम्युनिकेट करता है, और वो जो 40% पेंशन है वो 15 साल के बाद में अपने को रिस्टोर होता है. तो हमने लास्ट ईयर जो नागपुर में अपना अधिवेशन हो गया उसमें ऐसा प्रस्ताव दिया कि ये पैसा हमें 12 साल के बाद में रिस्टोर करो, और ये मुद्दा गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो गया, तो उसका फॉलोअप करना जरूरी है. और दूसरी मैंने जब इस पे मैंने जब रिसर्च किया तो जो पेंशन अपन बेचते हैं वो 8.5 साल में ही रिकवर हो जाता है. तो 3.5 साल भी वैसे अपन ज़्यादा दे रहे, 12 साल में हमारा पैसा वापस कर दो. दूसरा जो है, अभी हम लोग जब रिटायर हो गए हमारा पेंशन तो बेसिक पे 10 साल के बाद में ही रिवाइज होता है, बढ़ता है. और सर्विंग पीपल का उसको मैं कुछ बोलूँगा नहीं कि उसको उनको कितना भी दे दो, लेकिन हमारा मेरा एक पर्टिकुलरली कि ऐसा एक सजेशन है कि हमको 1% आधा % तो भी हर महीना बढ़ाओ. उसके पेंशन का हम वेट करते रहते हैं, कभी 30 तारीख आता है, कभी 31 आता है. तो ये एक मेरा पॉइंट है. बाद में हमारी संस्था मावल पुणे उसमें सिर्फ एक ही है और वो 1980 साल को स्थापन हो गई है. तब से हमारा कोई ना कोई नुमाइंदा जनरल बॉडी अटेंड करता है. तो हमारी एक रिक्वेस्ट है सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन साहब को कि हमारा एक आदमी भले ही पदाधिकारी ना हो लेकिन उसको एक एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाइए. यह हमारी रिक्वेस्ट है, फोर्स नहीं है. बाद में और एक मैं अभी फाइनेंस सेक्शन में मैं 18 साल काम किया हूँ. मेरे पास अभी 2400 ग्रेड पे जो 6वें पे कमीशन में अपने को दिया गया, 10 साल सर्विस हो गया, एक 20 साल को 21 साल को एक, वैसा अभी मजदूर भी 24 ग्रेड पे रिटायर हो रहा है. और जो फुल्ली स्किल्ड हाईली स्किल्ड जो ट्रेड्समैन होता है वो भी 24 से भी रिटायर होता है. तो मेरी और लांगेर साहब की बात होती रहती है. मेरे पास 200 एप्लीकेशन है, 200 में से मैं उनको प्रॉमिस किया है मैं जब दिल्ली जाऊंगा तब वापस आके आपका जो प्रॉब्लम है वो समझा दूंगा. और मैं जनरल साहब से प्रॉमिस करता हूँ अगर मेरा वो काम सक्सेस हो गया 200 एप्लीकेशन का तो कम से कम मैं 100 तो भी अगले साल पक्का लाऊंगा यार. सिर्फ मुझे वो करेक्ट डायरेक्ट मैंने DOPT से ओपिनियन मांगा, DGO से ओपिनियन मांगा, मुझे अभी तक कोई ओपिनियन आया नहीं, इसलिए वो काम मेरा रुक गया है. वापस मुझे बोलने की यहाँ संधि दी. मैं सब पदाधिकारियों का आभारी हूँ, आपका आभारी हूँ. ये जो हमारे पॉइंट है इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए बस. थैंक यू विलास जी, आपके पॉइंट पे बिल्कुल ध्यान देंगे, लेकिन आप प्यार थोड़ा शर्तों पे मत करो. प्यार करो मगर शर्तों पे मत करो. ऐसा होगा तो पॉइंट्स देना. नहीं दिया मैंने मराठी में. हाँ सर. हाँ, अशित
राणा, आशित रैना और डी शर्मा जी, और ये आदि नारायणा विशाखापट्टनम से। और हमारे यहाँ ये बताया गया था कि हमारे जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स है वो बोलेंगे नहीं, इसलिए चिट्ठियाँ मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है। ये अय्या राजू साहब का भी था, लेकिन वो विशाखापट्टनम से है, तो उन्होंने दूसरे का नाम सजेस्ट कर दिया है, इसलिए अय्या राजू साहब को हम बुला रहे हैं। हाँ, स्मार्ट मूव। डी शर्मा पीडी। हाँ, डी शर्मा जी। हाँ बोलिए। पीडी हुआ। हाँ पीडी शर्मा जी आइए। तो मैं लेकिन उसमें एक्सेप्शन चाहूँगा सर, महेश्वरी साहब, मैं हमारे प्रकाश एंडे साहब को बुलाना चाहूँगा इसके बाद में, क्योंकि हमारा सेशन अभी ख़त्म हो रहा है। और वो EPS 95 मेरे बहुत दिल के पास है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वहाँ 1,500 पेंशन मिलती है, किसी को तो 170 ही मिलती है। हम 9,000 और 10,000 में गाना गाते हैं, लेकिन उनके भी एक इश्यूज़ EPS 95 से हमसे जुड़े हैं। हमारे सेक्रेटरी EPS 95 है, तो मैं इसके बाद प्रकाश एंडे साहब को बोलूँगा कि वो कुछ बोलेंगे। Respected Maheshwar ji and Chauhan ji and other dignitaries on the dais and other delegates of the dais, ladies and gentlemen. On behalf of all Central Pension Association Visakhapatnam, I will be submitting the following points for your kind consideration and taking up the issue with respect to authorities. First point, establishment of new AD office CGHS at Visakhapatnam. At present, there is no dedicated office for CGHS, Andhra Pradesh. The strength of the CGH beneficiaries are more than 20,000 and at present, and they are likely to increase day by day. Existing 2 wellness centers in Vizag are unable to meet the medical requirements of all CGHS beneficiaries. Hence, it is requested to take up the matter with the Ministry of Health to establish more wellness centers at Visakhapatnam. At present, online booking of slot is available at midnight 12 o'clock only. All senior citizens are facing difficulty to book the slot at that odd time. Hence, the matter may please be taken up with the concerned authorities to change to a convenient time during daytime. Some of the names of the hospitals are shown in the book of Additional Director, CGHS, as empaneled hospitals, but they are not providing medical facilities as the ID number and password are not included in the portal of NHA. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Ayya Raju sahab. Yes, sir. Sir. Param Shraddhe, Chairperson, I mean Chief Guest of 68th AGM, President BPS Chauhan Sahab, Secretary General Maheshwari ji, Treasurer Sri Mishra Kumar ji, Media Person और मंच पर विराजमान सभी डिग्निटरीज और पेंशन साथियों, आप सभी को मेरा सत सत नमन। मैं पीडी शर्मा, प्रेसिडेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। हम हिमाचल से 3 रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। तो हमारे जैसे कि आपको मालूम है कि सरकार ने अप्रैल 2004 से जो पेंशन जो थी पुरानी वो बंद कर दी थी और एनपीएस स्टार्ट किया था, लेकिन हिमाचल में 15 मई 2003 से ही पेंशन जो थी वो ओल्ड पेंशन बंद कर दी गई थी और न्यू पेंशन जो थी वो शुरू की गई। यानी कि जो रिक्रूटमेंट 15 मई 2003 के बाद रिक्रूटमेंट हुई वो एनपीएस स्कीम के अंडर आए। तो उसमें तो ऐसे बताया गया था कि जो नई पेंशन स्कीम है वो ओल्ड पेंशन स्कीम से बहुत बेटर है, तो उसमें कोई भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन जब उनकी वो रिटायर होने लगे, यानी कि 2016 के बाद उनकी जब 2003 के बाद जो रिक्रूटमेंट हुई और 10 साल जिनकी सर्विस हो गई, पेंशन के अधिकारी हो गए, तो जब 16 के बाद वो रिटायर हुए तो जब उनको जो एनपीएस मिलने लगी तो वो सैकड़ों में थी।
फिर सभी जो थे पेंशन थे सभी वो घबराए, क्योंकि उसमें तो पेंशन मिलती कुछ भी नहीं था, दैट मीगर पेंशन, उससे गुजारा नहीं हो सकता था। यहाँ तो कि हिमाचल में तो 70 साल के बाद ओल्ड पेंशन नहीं मिल रही है, जो 1500 रुपये है वही बेटर है। तो फिर जो जितने भी पेंशनर थे उन्होंने अभी उनको सपोर्ट किया, और जो कर्मचारी थे वो भी इकट्ठे हुए और उन्होंने संघर्ष जो अब शुरू किया, चालू कर दिया। और फिर ऐसे हुआ कि अब हिमाचल में जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू हो गई है। जो कंट्रीब्यूटरी जो फंड जो था वो अप्रैल 2023 से बंद हो गया है, और अप्रैल 2023 से ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू हो गई है। यानी कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे एक शास्त्री जो थे वो रिटायर हुए, उनको NPS का जब बेनिफिट मिला था उनकी जो 1700 पेंशन बनी, लेकिन अब OPS में जब उनकी जो फिक्सेशन अब हुई है तो उनकी जो 27,500 पेंशन बनी है। इस तरह से कि हमारे लेक्चरर जो थे स्कूल के, उनकी जो पेंशन जो थी वो 2700 रुपये बनती थी, लेकिन अब ओल्ड पेंशन के अंतर्गत जब उनकी फिक्सेशन हुई है वो 37,500 हुई है, प्लस उसमें जो है हमें 34% अभी तक DA मिल रहा है। तो अब ऐसे है कि जिन स्टेट्स में वो ओल्ड पेंशन नहीं है तो उनको भी अब संघर्ष करना चाहिए। और मैं ये आपको अश्योरेंस दिलाता हूँ कि यदि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लागू करवाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, कहीं कोई रैली करनी पड़ती है, ये धरने में बैठना पड़ता है, तो अब हमें कहिए जो हिमाचल के पेंशन जो है वो आपका समर्थन करेंगे और रैली में भी पार्टिसिपेट करेंगे हम, और धरने में बैठना पड़ेगा तो वहाँ भी बैठेंगे। जैसे हमारा जो BPS का जो स्लोगन है वो वी आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। तो ये ठीक बात है कि हमने पेंशन लेनी है तो हम तो रिटायर्ड हैं, लेकिन जब हमको कुछ संघर्ष करना है, अपने राइट को हमने लेना है, तो हम वी आर नॉट टायर्ड। यानी कि जब अब ये 18 साल हो गए हैं रिटायर हुए, लेकिन मैं तो जब इसमें संघर्ष करना पड़ेगा तो उस हिसाब से तो मेरी उम्र जो है 76-70 साल होनी चाहिए, लेकिन मैं 18 साल का ही समझता हूँ। तो हमें जो है अपने आप को अपनी एज जो है वो शुरू करनी, जब रिटायर हो तब से शुरू करो आप। कि BPS में हमारा जन्म जो है वो रिटायरमेंट के बाद हो रहा है। अब मैं 18 साल में रिटायर हुआ तो मैं अब तो 18 साल का हूँ, लड़ना है तो पेंशन लिए तो ठीक है, मैं 73 साल से अब आपका हूँ, तो हमें जब सारे बेनिफिट जो वो मिल रहे हैं। बाकी जो हमारे जो BPS की जो मेंबर हैं वो बहुत ही यानी कि संघर्षशील हैं, काम कर रहे हैं। दे हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिटायरीज। तो हम जो हिमाचल के जो रिटायरी जो हैं वो हमेशा आपका वो साथ देते हैं। बाकी मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूं कि आपका जो प्रबंध है जो खाने पीने का बहुत ही बढ़िया है, और मैं मीडिया वालों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं, और विशेष करके जो हमारे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें ये हम मौका दिया। तो जय BPS। हाँ जी, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। तो जब हमारी सरकार की पहली मीटिंग हुई तो पहली मीटिंग में इन्होंने वो डिसाइड कर लिया था, और वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो अप्रैल 2023 से वो मिलना आरंभ हो गई है, और जो रिटायर हो रहे हैं जो भर्ती हुए 2000 उनको भी मिलेगी, लेकिन उसमें कंडीशन है कि वो जो उनको पैसा मिल चुका है उसको जमा करवाएंगे, तो उसको पूरा करने के जो धन को बेनिफिट है वो वैसे करेंगे। तो धन्यवाद शर्मा जी, धन्यवाद। जय हिमाचल। जय शर्मा जी, अब 18 साल के हो गए, आप मतदान के काबिल हो गए थे, इसलिए आपने गवर्नमेंट बदल दी 18 साल में ही। हम अभी बूढ़े हो गए शायद। हमारे साथी प्रकाश एंडे जी, इनकी समस्या तो और भयंकर है सर। वो तो 7,000 भी नहीं मिलती पेंशन, 170 रुपए। EPS 95 का भी सुन लीजिए, गवर्नमेंट बदलाएंगे हम और आप मिलके। आदरणीय डायस, सम्माननीय सदन, मैं एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष हूँ। बहुत बुरी हालत है, पूरे विश्व के पेंशनर समाज में जितनी बदतर हालत EPS 95 की पेंशनर की उसमें किसी की नहीं है। वी आर फाइटिंग फ्रॉम लास्ट 2010। उस समय 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये पेंशन मिलती थी। हमने 2010 से संघर्ष शुरू किया, तो हमारे संघर्ष के कारण, हम महाराष्ट्र के हैं, नागपुर के, तो उस समय ताकि नितिन गडकरी जी
प्रकाश जावड़ेकर जी ये हमारे साथ थे और संघर्ष हमारा इतना तेज रफ्तार से बढ़ रहा था कि उन्होंने हमारे संघर्ष के कारण ये भगत सिंह कोश्यारी अहवाल 2013 में आया और उसने भगत सिंह कोश्यारी अहवाल में मिनिमम 3000 और मोर और उससे महंगाई से जोड़ा जाए इस प्रकार का निवेदन उसमें है। खासदारों की कमेटी ने बनाया हुआ वो भगत सिंह कोश्यारी अहवाल है, आज भी है, लेकिन 2013 से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उस समय बीजेपी के जो प्रवक्ता थे, ये बताने लायक बात है, 13 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय वो बीजेपी के प्रवक्ता जावड़ेकर जी ने बोला था कि अगर हमारी सरकार हमारी सत्ता आती है तो 90 दिन में हम आपका पेंशन का मुद्दा उठा लेंगे, उसको हम इंक्रीज करेंगे, पेंशन को बढ़ा देंगे। स्टिल टुडे वी आर गेटिंग, आज भी 75 लाख पेंशनर्स हैं, रिटायर हुए 75 लाख, उनमें से 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 1000 के अंदर ही पेंशन मिल रही है। मैं बैंक में मैनेजर था, आई एम गेटिंग ओनली 1200, 1200 रुपये मुझे मिल रहे हैं, जबकि मेरे पेंशन फंड को, हमारा पेंशन फंड है जो 7 लाख करोड़ के ऊपर है। देखो बात, पेंशन फंड हमारा, पेंशन हमको नहीं मिल रही है। दूसरों को जो निराधार योजनाएं के प्रति वो जो संजय गांधी, अमुक गांधी, तमुक गांधी को देते हैं पैसे, उनका कोई एक पैसा जमा नहीं है पेंशन फंड में, ना उनका पेंशन है, ना उनको सरकार के प्रति या देश के प्रति विकास कार्यों में कोई उन्होंने काम किया है, जबकि हमने देश को ऊंचा उठाने के लिए काम किया और हमको मिल रहा है 1000 रुपये पेंशन फंड हमारा जमा है। तो हमने सरकार के बोला कि आप अगर ये निराधार योजना चलाते हो तो उसको बंद कर दो, क्या गरज है? अगर हमको आप दे नहीं सकते, हमारा पैसा आपके पास जमा है, आप हमको नहीं देते और निराधार योजनाओं के प्रति संजय गांधी, अमुक गांधी, उनको निराधार योजनाओं को चलाते हो, काहे को चलाते हो? हम हमारा खून पी के उनको चलाते हो का, तो उनको बंद कर दो, ऐसा हमने आह्वान किया है। मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर से मिलने की बहुत कोशिश हुई, प्राइम मिनिस्टर नहीं मिले। बहुत सारे संघर्ष के बावजूद भी आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें ख्याल दिया नहीं। बहुत बुरी हालत है, लगभग 3.5 लाख पेंशनर्स ये कोरोना काल में उससे ज़्यादा गुजर गए हैं, अब भी कुछ काम नहीं हो रहा। हमारा 12 दिसंबर को 12 दिसंबर को जंतर मंतर पे एक जन आक्रोश आंदोलन है। जन आक्रोश इसलिए हम बोल रहे हैं कि वर्किंग में जो है एम्प्लॉई वो 19 करोड़ लोग वर्किंग में है और 75 लाख पेंशनर है। इसलिए हमारा जन आक्रोश है कि हमारा पेंशन दो, दूसरे को देता हूँ, हमारा पैसा जमा है ना भाई। 95 से लेके 2001 तक हमारे सैलरी में से पेंशन फंड को पैसा गया। मेरे सैलरी में से 95 से लेके 2001 तक 441 रुपये गए, उसके बाद 2001 से 2013 तक 542 रुपये गए और 2013 से आज 1250 रुपये हर पेंशनर के पेंशन फंड को जमा है। वो 7 लाख करोड़ के ऊपर पेंशन फंड है और पेंशन में एक नया पैसा 20 साल से। सर सोचने की बात है, देखो आपके पेंशन के लिए हर साल, महेश्वरी साहब का मैं निश्चित शुक्रगुजार हूँ। महेश्वरी साहब एकदम से जुड़े हैं और पेंशन तो निश्चित बढ़ी है आपकी, बढ़ा देंगे, वो बढ़ रही है, लेकिन हमारा क्या, सर ने हमारे लिए, बट ठीक है। तो मैं सर के आदेश से खत्म करता हूँ। निश्चित रूप से एक बात आप ख्याल में रखो, तो बुरी हालत हमारी पेंशनर समाज की है, ईपीएस 92 की है। धन्यवाद। नहीं, अभी वो सम अप करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। अभी सभी वक्ता अपना मनोगत व्यक्त कर चुके हैं। मैं आदरणीय माहेश्वरी जी से मेरी बात समझ लो। हम लोग अपने
प्रेसिडेंट। हम अपने इस एजीएम के अंतिम पड़ाव में आए हैं। जिन डेलीगेट्स ने रिक्वेस्ट दी थी वे सभी अपने विचार रख चुके हैं, तथा मैं हमारे अध्यक्ष आदरणीय चौहान सर से निवेदन करूंगा कि वे अपना समारोह का भाषण करें तथा आज का हमारा ये अधिवेशन यहाँ सक्सेसफुल तरीके से कंक्लूड हो रहा है, इस बाबत को बात करें। आदरणीय चौहान साहब। उसके पश्चात जनगण मन होगा। लेडीज एंड ब्रदर्स, अभी आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वक्ता, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सुने। और प्लीज लेडीज, प्लीज काइंडली कीप क्वाइट। सो इतने अच्छे विचार लोगों ने दिए हैं जिनके ऊपर हमें चलना है आगे। हमने अपने सब डेलीगेट्स को अच्छी तरह से सुना और शायद उन्होंने हमारे रेजोल्यूशंस को ठीक से पढ़ा नहीं। काइंडली लिसन। हु इज देयर? काइंडली लिसन प्लीज। अगर आपको बात करनी है तो बेशक टेलीफोन पे बात करनी है या कुछ करना है, ये आखिरी मोमेंट्स हैं, तो प्लीज़ अगर ध्यान से सुनेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आप लोगों ने मेसी जी के रेजोल्यूशंस जो सभी को भेजे गए हैं, अगर वो पढ़े हैं तो आपको पता लगेगा कि मैक्सिमम जो आप लोगों ने पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं वो उनमें एक एक करके स्क्रूटनाइज करके सभी सेक्रेटरीज के विचार लेके वो डाले गए। कुछ अभी जो कुछ लखनऊ से, कुछ और स्टेशन से लेडीज़ पेंशन के बारे में बातचीत हुई है। मैं ज़रूर अपने लांजवाल साहब से कहूँगा कि वो उनके बारे में विचार करें, देखें क्या केस है, और कुछ ज़्यादा समस्या है तो रेलवे बोर्ड के लिए लिखने के लिए या कुछ भी हमें भेजें ये, और उसको अगर कोशिश होगी, हमारे मशीर जी इस मामले में बहुत सक्षम हैं, उनसे इंटरव्यू लिया जा सकता है। जिस भी किसी स्टेशन की गलती है उसको करेक्ट करवाया जा सकता है। आप लोगों का जो विचार शैली आज हमने देखी है, सभी ने सुनी है, वो बहुत प्रशंसनीय है, बहुत ही लाभदायक रहेगी हमारे फ्यूचर के काम के लिए। एक नई ऊर्जा मिली है आप लोगों से बातचीत करके। आपका जो भी कोई पॉइंट हमारे पास आता है तो डेफिनेटली उसको थोरली देखा जाता है, और बहुत से ऐसे केसेस हैं जो गवर्नमेंट के पास पड़े हैं जो हमने भेजे हुए हैं और वो सॉल्यूशन स्टेज पे हैं। महेशी जी ने बताया है अपनी उसमें, वो 30 जून और 31 दिसंबर वाला, इट इज़ ऑलमोस्ट एट दी फाइनल स्टेज। वो किसी भी दिन आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। जैसे अभी 13 तारीख को जो एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो लेटर निकला है CGHS के बारे में, इस तरह से वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और
हम तो चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर सबका बहुत उज्जवल हो और हमारे सभी पेंशनर्स भाई बहन सभी खुश रहें, सेहतमंद रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं आज की सभा को ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा और सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ लेडीज़ और जेंटलमैन का, जिन्होंने इस फंक्शन को इतना बढ़िया रूप दिया है जिसको हम दिल्ली वाले हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद चौहान सर। नाउ अभी हम जनगणना मन के लिए हमारे जो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद से बड़ौदा ब्रांच के हमारे साथी आए हैं, नवीन भाई पटेल, सभी चंद्रकांत गामित, सभी बोलेंगे। हाँ, दिलीप भाई गामित, खड़े हो जाएं प्लीज। नवीन भाई पटेल आ जाइए सर। एक डेकोरेटिव और मेडल होल्डर के साथ में जनगण मन बोलने का एक अलग ही सौभाग्य है। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है। हमारा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न करने में आप सभी का बहुत बहुत सहयोग रहा। कुछ लोग नींद में थे लेकिन फिर भी जाग गए और सभी लोग यहाँ इतने समय तक उपस्थित रहे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हमारे गुंटूर डिवीजन के साथी महेश्वरी जी के साथ में ग्रुप फोटो लेना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे दो ग्रुप दिख रहे हैं, एक ये गुंटूर का रेलवे का और दूसरा हमारा लाल जैकेट का। वो हमारे लोग भी फोटो लेना चाहेंगे, वो भी सब स्टेज के पास आ जाएं। नागपुर डिवीजन के भी, गुंटूर डिवीजन के साथी आ जाएं। फोटो આપણે યાર તમે પણ તો યાર તમે એવો ચાન્સ આવતો નથી ને, પણ પછી આવતો નથી ભાઈ। તમારો નંબર ગુમ થઈ ગયો મારો 950 950 950 300 1599 1599 1599। મારો ચંદ્રકાંત નામ છે, લાંજેવાળા। જય એ ભાઈ ચંદ્રકાંત આપો, ચંદ્રકાંત આપો, તમે ચંદ્રકાંત નાગपुर આપો, नागपुर या। बस हम ग्रुप फोटो करेंगे साहब के साथ। सिंस वी आर ऑल रेलवे पर्सन्स ना, आइए सर, आइए सर। हो गया।